Dear learners, welcome to today's session. Dr. Mohanty is present, so I welcome all of you. I don't know, how interesting this class is because you are the best judge. You can tell the teaching skill of ma'am because why you feel this after repeated effort of our side, sending SMS, mail, and WhatsApp group also, the number is reducing. So that's why it's alarming sign for us because we feel bit uncomfortable. We students are not joined. So either the class is not interesting, or there is a networking problem, or something else. I don't know what is the reason. You are the best judge. You can analyze why the students. I mean, day by day it's reducing because when you started the class, near around 25 students are there, but now the number is very less. And more or less, I welcome you all of you to this today's session. Due to this pandemic, we all are in home, so stay safe, stay home, and I think this is the right kind of opportunity to join through this Google Meet, and you can interact each other. So on behalf of IGNOU, on behalf of Regional Center Bhubaneswar, and also on behalf of New Delhi. So we had started this online counseling. Before to this, you never tried this. So I think the future generation demand this. In future, face-to-face interaction will going lesser and lesser, and particularly in the distance education. So we believe in online counseling. So we will experiment this time. So I do feel from this cycle onwards, you will try more and more for this online cycle because it's cost effective and also it is easier to reach to the students. So with these words, I conclude my things. I welcome once again to learners and ma'am also. So now I hand over the session to Dr. Mohanty. Mohanty, I now am welcome you to today's session. Thank you, sir. I welcome all learners to this session. Well, today we have to discuss a part from block 3, that is about the Gulf nations, how the Indian diaspora started doing up with the Gulf nations. They have their own history. For first few minutes, we'll be discussing that, and then we will move over to the policies that both national and international policies that has been constructed right from the very beginning till present times. So right now, I will just take the discussion. I'll not spend much time with this historical journey that we had with the Gulf nations because, as we were discussing in the previous few sessions, more or less some of the things appear repetitive because now by this time we already have an idea as to what was the profile of Indians during the pre-war and the post-war period to various regions that they visited, whether it was Europe, it was Africa, it was Australia or America. Now, coming up to the question of the Middle East, here you will see that we always associate with it with a particular kind of force, labor force. Uh, if most of the discussions we had earlier, it was pertaining to certain kind of migrations that was solely what I would say is that was solely a result of colonialism. It was after the British rule when they wanted laborers in the plantation sites and later on in industries or for after 70s when we started talking about the professionals, there was a trend of migration, a trend of emigration from India to other countries. But when you talk about West Asia, basically for West Asia the relationship has been there from ancient times, so that was the the peculiarity of this very reason. And there were three or four paths by which Indians could travel because there are evidence where we talk about Emperor Asoka. He also exchanged ambassadors with countries like Syria, Egypt, Macedonia. I'll try to pick up I'll try to be bilingual. ଆପଣ ମାନେ
Emperor Asokanka na shunithibe se say time ru I think he belonged to the period of 4th or 5th century BC. Somebody who is good in history would be having an idea. Uh, from that period onwards, we started having establishing relationship with West Asia. ତେଣୁ ସିରିଆ ହେଲା ଇଜିପ୍ଟ ହେଲା ମାସିଡୋନିଆ ହେଲା ଏଇ ସବୁ ଦେଶ ମାନଙ୍କୁ normally ତାଙ୍କ time ରେ ବହୁତ ambassadors ଯାଇଥିଲେ because Ashoka was the one who was trying to spread Buddhism in Central and West Asia, and it was for that person that for that reason that we started some people, very few, they started migrating to these places. There were cultural traditions of Central Asian countries which were also influenced with the spread of Buddhism during the Kusana period. And we all know about the famous Silk Route trade. Silk Route trade, jota ki China और West ଭିତରେ होतला. You will see that the trade relations were further strengthened. When we because it was because of this Silk Route trade that the our connectivity with West Asia got further strengthened. And then you will see that also during the medieval times, we also have certain evidence of diplomatic relation of exchange in terms of art and architecture, certain religious conglomerations, exchange of religious conglomerations. There has been influence, medical knowledge, there has been exchange of medical knowledge. So there it has always been there. Then if you look at the profile of Indians in the Gulf region, you will see that these Indians they appear to have migrated even in the pre-Islamic era. Even Islam had established itself. Certain Indians had traveled during that period of time, either maybe for certain form of businesses, for seeking employment with Arab traders because they were affluent traders, so it was a good destination for Indians. And among the 7 groups that migrated to Arabia and settled down in Bahrain, Oman, uh, or Basra, you will in this period it was known as the Jats and the Visaria. So it was a time where Islam was about to advent, and there were Indian settlers already in Arabia who were involved in various activities. And it is we always believe that what history says that 10th century AD has been pronounced as the golden age of Indo-Arab trade relationship. It was the period where the maximum exchange trading relation was established between West Asia and India. So it was during this period you will see that there was a rise in Islam, and Baghdad was founded around the 7th century, and that became the capital of Arab world. Regarding Baghdad, we have so many stories. Your the entire stories of Arabian Nights, and also which we have been hearing, which has been there since a very long time. So there, it gives you a sense of the antiquity of the Arab world had. And at the same time, you will see that there was certain relationship between India and Arab. And there was this ancient port, but ancient port thila Abulabali, and it was called the Marches of India. It was later on developed into Basra. Then these are certain what you will say geographical outlets that actually facilitated the migration between these two countries. And you you at the same time you will see that you will find a significant number of merchants. किछटा आर्टिस्ट थिले, किछटा merchants थिले, किछटा professionals थिले जो माने कि migrate हेइथिले आ settle down पूरा कर जाइथिले सेही रीजन रे. तेनो जेतेबेले हमें POIs कथा को नॉर्मली POIs हमें indentured labor जोटा कि ब्रिटिश colonial times रो आसिला हमें सेही मानु को usually most part रे सेया हेइथाय. किंतु Arab case things were different. तमे देखिबो कि जे 10th century ancient times रो ही गोटे migration trend थिला towards those countries. And you might have heard of आमे जेतले Baghdad विषय रे कहू, there are so many stories, केते गप अछि, केते historical facts अछि, we have grew up hearing those.
So, ancient times, there are many historical evidence that Indians already had established relationship with the Arabs. Then, if you talk about medieval times, then also you will see that there was you know by 9th century, 10th century, there is evidence that Sindhi, Gujarati merchants, both Hindu Muslims, they played a dominant role in the maritime trade. Because if you look at those regions, those western part of Odisha, western part of India, which is which are sea facing, it was easier for them to go to these Middle East countries. So it was mostly, Gujaratis, Sindhis who could easily travel across the ocean to reach there. And during late part of medieval period, there was a considerable amount of exchange of Arab and Indian scholars and religious leaders. Arab scholars ଆସୁଥିଲେ ଏଠୁ Indian scholars ଯାଉଥିଲେ, religious scholars ମାନେ ବି visit କରୁଥିଲେ. So there was exchange, and this exchange was economic and at the same time cultural, जोटा कि ଆମେ medieval time ରେ ଦେଖିଲେ. And then if you talk about Vasco da Gama, he noted the presence of Indians on the shores of East Africa. East Africa, tere Vasco da Gama asthile, setalku it was around 1490s, and he could see that considerable number of Indians were there, and it actually gave a idea that the relationship between trading relations, so कि को भी form रहे हो, it was quite ancient. And Kalhat बोले ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି, which is in the Omani fort. There are certain ruins of a Hindu temple. The Hindu temple ର ଯେହେତୁ ruins ଅଛି, ତେଣୁ historians get to know कि the relationship is quite ancient. Then 17th and 18th century रे आपण माने देखिबे कि जे Indians they had traveled to Iran and Central Asia, and you know certain scholars they have also noted the existence of a Hindu temple in Iran and another at Baku, and they believe that there is a perpetual flame burnt and the priest was always in attendance. So outside India, Nepal, Tibet, the temple of Baku was a major center of Hindu pilgrimage. এটা ଗୋଟେ ବହୁତ strange ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ଗୋଟେ Islamic world ରେ there was a Hindu temple, and that too from the ancient times. ଯେତେବେଳେ କି communication transport ହେଇପାରିବ ବୋଲି ଆମେ ଚିନ୍ତା ବି କରିପାରୁନଥିଲେ. And in contrast to the 17th and 18th century, in which India's impact on the Persian Gulf was, quite influential, it was mostly confined to trading relations. 17th, 18th century basically ଆମେ ଖାଲି trade ही बेसी କରୁଥିଲୁ West Asia संगे. And then you will see that for about a century there was a major partner in Indo-Gulf trade and commerce, and they had an impact on the Gulf countries. When you talk about the initial phases of modernization or cultural renaissance in those areas, and many other aspects of, there was a substantial change, and you could actually see the influence with, these communities influencing them. And it was during this period of time that a number of merchant communities were already established in the Red Sea region. And there was virtually an extension of British India and Indians in the Gulf. And they enjoyed the privilege as being a British subject, if you talk about the Gulf. So, there has been many evidence that 17th, 18th century, Arab West Asia, it was visited by Indian migrants for various reasons. Reasons mostly thila trade and to some extent cultural exchange. Because ଜାଣିଲେ ଯେ ଅଶୋକଙ୍କ time ରେ he was actually sending people around in and around India for spreading Buddhism as a religion. So it was mostly cultural during those time. If you talk about Indian diaspora, there was if you see that there in modern times,
how is it that Indians started migrating to the Gulf, and what was the kind of work they used to do? 70s period normally ଆମେ କହୁ ଯେ it is the post oil boom phase, and ଯେତେବେଳେ ଆମେ labor କଥା କହୁଛେ migration of Indian labor to Gulf countries, it's a recent phenomena because it was post oil boom period this happened. But if you look at this reason, the presence of Indian labor, it actually dates back to the early oil exploration. जब oil का नुआ discovered ହେଇଥିଲା ସେ region रे. There was this company called Darcy Exploration Company in 1902, and it was actually inviting laborers from different parts of the world, and many Indians were actually working there. And there was this Anglo-Persian oil company that was incorporated in 1909, and it employed more than 300 Indians. Then, in spite of certain restrictive nationality costs, Gulf countries have relied always on foreign manpower to perform these skilled and various semi-skilled, unskilled laboring tasks. So, if you look at the migration of Indian labor, कि केते बड़े really माने बहुत मात्रा रे migrate करिवा लोक आरंभ कले Gulf countries को, ये 20th century आरंभ होला जेतले oil टा discover ହେଲା ता पूर्वरु it was just ଗୋଟେ cultural ये रे आमे देखुथिले ଗୋଟେ frame रे कि it was for few traders, you know affluent traders सेपटु आमे देखुथिले बगदाद रू normally Muslim traders भी आसंती in ancient and medieval times. There are certain instances किंतु जेतले आमे कहूछु बट immigration process already start हे जाईची. It was with the 20th century जेतले Gulf रे oil discover हैला, and then you will see that many Indians started working in these Gulf oil countries, and situation it more or less continued until mid 1970s, when following the hike in oil prices during 1973 and 74, there was substantial increase in oil revenues. बहुत पैसा रोजगार करले जो Gulf nations माने 70s पूरे, and here you will see that you could find many development programs coming up. You had recreation of amenities, schools खुला हैला, hospitals खुला हैला, transport ये improve करा हैला, and या द्वारा कौन हैला ना it resulted in a high demand not only for highly skilled laborers but semi skilled, unskilled सब प्रकार worker they went and joined there. And there was a major outflow of Indian migrant workers in the last 3 decades, and they had been to the Gulf countries where few million workers are estimated to be employed. So the large number of Indian workers in Saudi Arabia, they were actually into this business of oil. So UAE କୁହନ୍ତୁ, Oman, Kuwait, Saudi Arabia, Bahrain, ये सब देशों को बेसी visit करथिले, and as you all know these were all oil rich nations. यदि आपण statistics देखिबे आपण देखिबे कि after 70s हठात बड़ी गला. Prior to that कोटी अल्प किछटा migration होतिला, and तभी हमें देखिबा कि केतेटा category of workers or Indians actually visited these Gulf countries. You will see that workers normally हमें तीनटा category कथा कहू. Worker in whose case immigration clearance is required, such as say supervisor ହେଇଥିବେ, skilled workers ହେଇଥିବେ कि semi skilled worker ହେଇଥିବେ, drivers, cooks, clerical work ए सब काम रे engage थिबे. नहले सेकंड होची बिजनेसमैन किंबा एंटरप्रेन्योर्स, और थर्ड होचंती इलीगल माइग्रेंट्स जो माने कि वीजा परमिट सरी गला परे भी ओवरस्टे कर दियंती कि काले चाकरी मिल जिवो कि गोटे ल्यूक्रेटिव ऑफर्स. दे फाइंड दैट इट्स अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी. इंडिया रे बेसी अपॉर्चुनिटी नाही सेठी गले ये है मे बी बेटर लाइफ हे जिवो, तेनो इलीगल माइग्रेंट्स बहुत भी थांती. And एठी आपण माने देखिबे जे माइग्रेशन, when you talk about migration of Indian contract workers abroad, it's not uniform. केबे भी normally कोठी भी uniform न थाए. माने सब बळे या नुहे कि जे अफ्रीका को खाली इंडेंचर्ड लेबर जिवे, no, that is not the case.
ସବୁବେଳେ ବହୁତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକ ମାଇଗ୍ରେଟ କରିଥାନ୍ତି. Even in today's century you will see that there is a group of there is a high demand for unskilled laborers, for semi skilled laborers, and also for high professionals. You know, everybody is an immigrant of different categories of class and different category of skills. Here we are talking about. So you know, if you look at some of the migration figures, it explains in terms of certain political economy factors कि कहीं की हठात माइग्रेशन बढ़ जाए कि कमी जाए. Fluctuation in oil prices रही पारे. Oil price जदि बढ़ जिवो, you know, there is a law of demand and supply, तेणु से अनुसारे labor demand बढ़िबो. And Arabization labor policy, Arab रे labor policy टा की को प्रकार को टाइम रे ता ऊपर भी डिपेंड करे. Because next I mean, after few maybe after 5 or 6 10 minutes we will be discussing about policies. तमे normally आमे देखिबा कि जे कोउ कंट्री को प्रकार पॉलिसीज अप्लाई कला फॉर इट्स माइग्रेंट्स. तेणु सेई टाइम रो पॉलिसी जहा हेथिबो सेटा हठात माइग्रेशन बढ़ाई दबो. पॉलिसीटा जति बहुत रेस्ट्रिक्टिव हला हठात कमी भी जिवो. तेणु इट ऑल डिपेंड्स कि से अरबाइजेशन लेबर पॉलिसीटा कोन थिला. And what we see, 99 there was a sharp decline in the number of persons who were trying to look for employment in Arab, especially Saudi Arabia. କାହିଁକି ନା ହଠାତ୍ କମିଗଲେ 99 ରେ. The reason was determined because efforts to enforce Saudization. ନାଇଁ ଯେମିତି ଆମେ କହୁ କି ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମେ ଆମ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଲି କାମ ଦବା, ଆମେ ଏହା କରିବା, ଆମ ଲୋକ ଅନଏମ୍ପ୍ଲଏଡ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ବାହାର ଲୋକ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି. ବେଳେ ଏମିତିଆ ବି ଗୋଟେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲେ, ଗୋଟେ କରେଣ୍ଟ ଆସେ. ତାପରେ ତାକୁ ଲାଗେ କି ଯେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ପରେ ଏତେ କାମର ଏତେ डिमांड एते बढ़ी जाए लेबर मानक से माने पाळंतिनी देन दे लेट गो ऑफ दोस पॉलिसी. एमती मझिरे मझिरे जेतेले हबो आपण माने देखिबे जे सेतेले गोटे लेबर पोस्ट सेही कंट्री को डिक्लाइन करि जाउची. The situation has improved since then 2000 onwards एबे बढ़ी बढ़ी चली छी. And interestingly आपण माने देखिबे जे अरब को नॉर्मली को माने जानती ए सॉरी हां सऊदी अरब को नॉर्मली तमे आपण माने देखिबे कि एबे प्रेजेंट एज रे चारिटा state ru basically you will find people. Number one is Kerala. Maximum number of people visiting the Middle East part is the Keralites. Then Tamil Nadu, Andhra Pradesh, and Karnataka. So mostly it is restricted to South Indian states. So together these four states they send about 70%. माने 70% जति की लेबरर अछंती इंडिया रु 70% जाउछंती ए जो चारिटा स्टेट. एंड आपण माने देखिबे जे यू नो इतरा हम रिक्रूटमेंट कथा को इज अ वेरी इंपोर्टेंट रोल. ये सर्वे करा गला 800 आपण को टेक्स्ट रे एटा अछि 800 साउथ एशियन मेल्स को सर्वे करा गया जाइला. And it was seen that you know uh, when we talk about skilled and unskilled jobs in Kuwait, that showed about 34%. They moved through network of friends and family. Suppose मोर गोटे रिलेटिव जाय कि ऑलरेडी कुवैत रे चाकरी करछि, मु कहबी प्लीज मते नै जा मते ये कर, तनु से मते नै जीव. तनु कुवैत रे देखा गला 34%. आउ अलगा देश रे देखा गला जे 50% आछंती, रेस्ट 50% आछंती रिक्रूटिंग एजेंसीज. किंतु मेजॉरिटी एमती बहुत देश रे देखा जाउची कि जे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स जरा हाई सैलरी अर्न करंती. एंड से माने यूजुअली गोटे पुल फैक्टर थाए कि हां लाइफ बेटर हे जी तम माने भी पळे आसो, यू हैव फाउंड ए गुड जॉब. ए जिंसटा सब बळे हुए. तनो ए जो अरब कनेक्शन का जोटी रहउची जोटी मोस्टली सेमी स्किल्ड लेबर जाउछंती, वी कुड फाइंड दैट एटा गोटे विराट बड़ कारण थिला. If we just you know for the next few minutes we'll just try to have a look at the profile of the Indian migrants जो माने कि Indian diaspora टाइप जो माने कि Persian Gulf region रे अछंती से माने को प्रोफाइल टाइप है exactly कौन, what is the kind of profile that they carry. And you will see that the Indian diaspora in the Persian Gulf region is in a constant flux. माने उटे सब बड़े उटे change चली छी for two important reasons. Circulation, continuous circulation of migrants. Migrants आसुछंती माने गोटे stream
एव्री टाइम चली कोठी बेले ए टाइम रे रही जेबो ए टाइम रे माइग्रेंट्स आसीबेनी बोली नाही कंटिन्यूअसली माइग्रेंट्स आसी चलछन्ती and then upgradation of skill composition of the workforce से जो workforce टा जो लेबरर अछन सेठी गला परे से माने तांको स्किल बढ़ई बढ़ई चालुछन्ती तेनो गोटे यूनिक नेचर ऑफ डायस्पोरा जे नुआ लोक आछन्ती काम शिखुछन्ती पुनी इम्प्रूव करछन्ती भलो काम करछन्ती भलो रोजगार करछन्ती तो से स्ट्रीम टा सब पळे चालिला गोटे कंटीन्यूअस ये रे चालिला ତେଣୁ ଏଠି କୁହାଯାଉଛି ଯେ the unique nature of diaspora and the fact that there is hardly any social scientific study on this subject ବହୁତ ବାଟରେ ଆମେ ଏବେ ଷ୍ଟଡିଜ କରି ସାରିଛୁ ଯୋଉ ଡାଏସ୍ପୋରା ଟପିକ ଉପରେ and ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ ଯେ ମାନେ illegally हो कि legally हो it's people like you and me who actually in search of a better opportunity who have ended up there and एटी किछिटा सोर्सेस अछि मोस्टली आपण माने देखिबे कि जे न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स रे बेले बेले थाए कि these sources suggest that vast majority of Indians in Gulf countries have been earning their livelihood honestly and in a legal manner बहुत अल्प अछंती जो माने कि इलीगल मीन्स रे सेठी काम करंती कि स्मगलिंग करंती जेंति कि गोटे मीडिया रे देखा जाय ना जते बेले भी कोठी स्मगलिंग होची यूजुअली गोटे अरब कंट्री रु आसुची कि ये आसुची गोटे माइंड रे थाए कि अच्छा अरब माने अमेरिका किंबा ऑस्ट्रेलिया हेले वी पीपल एक्चुअली बिकम वेरी हैप्पी कि हां हां सियाड़े जाउची अरब के जाउची वी एक्चुअली डोंट गिव इट टू मच ऑफ इंपोर्टेंस बट एटा गोटे construction of the media but the reality is that कि normally देखा जाए कि जे majority लोग सेठी honestly live करंती very few people illegal economic activities रे engage होते स्मगलिंग हो कि बेगिंग हो बहुत अल्प लोक सेठी थांती बट गोटे परसेप्शन सेमति रहि जाई छि अरब वर्ल्ड प्रति then you will find that Indian immigrants in Gulf region have two major class segments कौन ना स्किल्ड लेबर थांती जो माने भी गल्फ एरिया को जानती से माने स्किल्ड है थांती सेमी स्किल्ड है थांती नले अनस्किल्ड है थांती एंड सेकंड होचे प्रोफेशनल्स और एंटरप्रेन्योर्स जो माने कि रियली माने हाईली स्किल्ड है थांती तो स्किल्ड सेमी स्किल्ड अनस्किल्ड एंड प्रोफेशनल्स आर हाईली स्किल्ड the proportion of each segment in Gulf country varies from country to country ଆମେ को country କଥା कहूचे ता ऊपर नै कि एटा डिफर करे किंतु आपण माने देखिबे जे 60 to 70% जो माने इंडिया रो जाई थांती मिडिल ईस्ट को से माने एक्चुअली से 60% 70% इंडियन भी जानती माने when we talk about the labor total count of labor in these Arab wars then you will see that late 80s forward there is a gradual shift our जो socio-economic profile रे Indians माना गोटे shift हेची you will find more number of workers in construction industry जोटा कि skilled और semi skilled workers दरकार पड़े और recent किछिटा year जणा पडुची studies रु जे UAE रे कोन हेची ना there has been an upward flow in white collar jobs हठात यूएई रे लोक एबे बेसी प्रोफेशनल्स खोजुछंती आ किछटा साइजेबल नंबर अछि जो माने कि होटल्स रेस्टोरेंट्स रे काम करिवे तेनो यू हैव यू नो बट पूरा variety of category of migrants is there when you talk about the Gulf country but at the same time you will see that a good number of Indians they are engaged in business activity both rich and affluent Indians they have established themselves in the Arab world जेमती कि some of the business houses जोड़ा कर गोटे example दे भी जसन माल UAE रे मल्होत्राज in Kuwait खिमजी रामदास ओमान रे they are very established Indian business houses जो माने कि अरब रे पूरा पूरी establish करछंती now they are going for joint ventures into बहुत देखिबे आउ आपण जदी प्रोफेशनल्स कैटेगरी देखिबे सपोज डॉक्टर्स इंजीनियर्स हेले किंबा मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव्स हेले ते कॉन्स्टिट्यूट माने 10% बट मेजॉरिटी एठी थांती अरब वर्ल्ड रे सेमी स्किल्ड आउ स्किल्ड लेबर बेसी थांती and if you look at the NRI remittances of investment जो माने कि which is very
today it is very important when you talk about this age of globalization and we talk about FDIs and India's economic development. You will see that India's foreign exchange receipts from remittances has increased when it comes to the Arab world, and this has actually helped India in a lot very way, and that is the reason today we talk about non-resident Indian deposits. It has a reason ever since the 1970s. Then you will also see that there is a rapid increase in economic growth in the level of consumption of the people who are actually working in these Gulf areas. And normally आपण माने देखिबे जो माने भी for example Kerala रे ये जो Gulf money it has like flowed into their lifestyles. You will find lavish expenditure बाहागर हैला को फेस्टिवल हैला लोग बहुत खर्च करि करछंती गोटे कंजम्पशन पावर आसी जाईची because of this Arab money, which which is a recent phenomenon. आपण माने देखिबे जे एटा it was only after the oil boom period गोटे हठात बढ़िला ता पूर्वरु the trend was not so, was not as we thought of. Now if you talk about certain social organizations that is there in the Arab countries, ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ ଯେ you know there is this social organization among overseas Indian communities, and it is represented by Rabindranath Tagoreଙ୍କର ଗୋଟେ analogy थिला the banyan tree तांकु नै कि एमती ଗୋଟେ social organization ହେଇଛି, and टैगोर ए जो माने ए जो banyan tree टा गोटे एग्जांपल माने एटा जेमती banyan tree तार रूट थ्रू आहु गोटे रूट हबो से पूरा गछटा स्प्रेड करी करी जीवो. The same is about the Indian settlement. माने गोटे इंडियन गला से सेठी सेटल करी गला तांको थ्रू तांको प्रोजेनी पढी 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 से माने गोटे ओवरसीज रे गोटे कल्चर डेवलप करी देले. Banyan tree टा सेटा को मेटाफोरिकली माने यूज करा जाउची, and that's again the community life, the kind of the way they are staying, it's again different. Arab ray, you will see that you can find a change in the social organization elements as caste hella, kinship hella, family hella, and they have occurred due to certain conditions. ଯେତେବେଳେ conditions ଯାହା ଆସିଛି ମାନେ ଏବେ suppose economic condition ଟା ଠିକ ନାହିଁ, they will adapt a different kind of a situation, and it would seem that the degree of freedom, when you talk about freedom of these immigrant Indians in these colonial societies, you will see that in various colonial societies there was a major factor that transformed the indigenous pattern. Kali hame discuss kartile je why you will see that overseas Indians in West Indies hele, Mauritius hele, Fijis hele, they were primarily formed due to slavery like indentured labor. जोटा कि गोटे गोटे माने गोटे radical transformation in their social organization आनिथिला. जेमति फिजी रे they don't identify themselves with Indian anymore. सेमती किछटा कंट्री थिला जोतरे कि twice migrant अछंती, thrice migrant अछंती, and we believe कि कोठी कोठी retain हेची कोठी कोठी हेइनी. But at the same time we have advanced certain arguments can be advanced in relation to the this idea of banyan tree. जेमती हम गोटे banyan tree को compare करछु से जेमती spread करी करी चालुची, there you will see that Indian overseas Indians they spread across to have their own views, they have their own socio-cultural patterns, and it keeps growing. So you will see that there has the migration process itself, it has its limits on its presumption in terms of certain selectivity of migrants कि काहाकू से माने allow करिवे काहाकू allow करिवे नहीं, किंतु once they go there they actually they are in a position where they have to they have to be on their own.
ତେଣୁ ସେ ଯୋଉ କେମିତି ସେମାନେ ରହିବେ ସେଟା ଲଟ୍ ଅଫ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିଥାଏ ବଟ୍ there you will see that the working and living conditions of Indians basically ଯେତେବେଳେ ଆମେ Persian Gulf କଥା କହୁଛୁ କି ଯୋଉ Arab world ଟା କଥା କହୁଛୁ you will see that it's mostly male dominated जो लेबरिंग क्लास आम जेतले आमे जो चारटा स्टेट रु बेसी जाउछंती से माने अरब वर्ल्ड को आमे देखुचे जे दे मोस्टली दे डोंट टेक देयर वाइफ्स अलोंग विथ देम so the result is there is an there is a sex ratio disbalance सेठी हेई थाए ए सब कम्युनिटी रे and because गोटे जेहेतु लेबरिंग क्लास को जानती and at the same time it's a new alien situation पूरा फैमिली को नहीं की गले केमती हो से जो इनसिक्योरिटी भी सब बड़े था and Arab world टा भी गोटे segregated they don't carry their जहाँ भी आज पर्यंत statistics मिली देखा है they don't carry their wives or their families with them. So this actually has seriously hampered the formation of an Indian community. आमे जेमती देखिले हां से माने किए का प्रैक्टिस कास्ट प्रैक्टिस हला ये हला रिटेन कला न कला अलगा कथा हला किंतु जेतेला ए जो आमे जो बैनियन ट्री कथाटा कहले कि जोटा स्प्रेड करूची सेटा ये करूची टागोर कर जोटा से जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन कथाटा कहउछंती ए केस रे कोन हला ना जेहेतु गोटे एका लोक सेठी कम्युनिटी कांसेप्ट एते माने सीरियसली फॉर्म हे परिबनी मु कहूनी जे जमा हबनी बट जोटा कि तमे अन्य सोसाइटीज रे पाइबो यू विल नॉट फाइंड इट इन द गल्फ रीजन एंड देयर इज ऑलवेज मोस्टली दीस पीपल दे गो देयर दे बिलीव दैट हां किछ दिन पैसा रोजगार करबी तापरे पळी आसीबी सो देयर इज दिस मिडिल क्लास जो माने कि प्रोफेशनल्स और एंटरप्रेन्योर्स थांती दे आर द वंस जे कि फैमिलीज को नै कि जिबे but even here also family members be assumption for variety of reasons because Arab को लेके हमारा different perception अछि and at the same time it is expensive and se mane bhabanti ha we will go for a short term stay please someone mute your microphone. Yes. So when we talk about this, oh, it's echoing. Ravi Sharma, please. Can you hear me? Hello. Could you please? Ravi Sharma, could you?
मैडम आपनकर फोन टा म्यूट को हे जाईची किछि सुना जावनी भॉइस Okay, thank you for reminding me. So ଏଇଟା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ I think you missed some parts because the microphone was muted somehow without my knowledge. You will see that ଆମେ ଏଠି ଏଇଆ discuss କରୁଛେ ଯେ ये जो अरब वर्ल्ड कथा जो ଯେତେବେଳେ ଅଛି you will find please microphone ସମସ୍ତେ mute ରଖନ୍ତୁ बहुत disturbance होची yes ଆମେ तेरे अरब वर्ल्ड कथा एठी कहूछो तमे देखिबो कि जो कम्युनिटी फॉर्मेशन कथा पडिला बिकॉज़ हमें जेतेबेले सब कंट्रीज रे सब कॉन्टिनेंट्स रो डायस्पोरा कम्युनिटी स्टडी करथिले हमें देखिथिले जे गोटे न्यू काइंड ऑफ कम्युनिटी फॉर्मेशन होथला जोटा कि मे बी फिजी रे जेंति जमा इंडियननेस रहिलानी ट्रिनिडाड रे से माने पूरा मिसी गले तांको एथनिक कम्युनिटी संगे किंतु न्यूजीलैंड रे से माने मेंटेन करके रहिले सिमिलरली अरब रे लोक माने सब बळे शॉर्ट टर्म स्टे पे गले 8 वर्ष 10 वर्ष एमति रहि के पळे आसिले आ यूजुअली केही फैमिलीज एते नौ नथिले तेनो दैट वाज द रीजन आमे कहले कि से कम्युनिटी इन अ फ्लक्स माने हठात गोटे कम्युनिटी डेवलप करबो से पुनी बहि जाउथबो गोटे नुवा फॉर्मेशन होथबो ए प्रकार हैला गोटे जेमति गोटे परमानेंट कम्युनिटी जेमति फॉर्मेशन सेटा एते देखिया को मिलि नथिला अरब वर्ल्ड रे हां then you will also see I mean just very briefly we will try to look at some of the individual cases I'll just take 2 or 3 minutes on this and next we will move on to the policy issues आपण माने देखिबे कि जे suppose countries like Israel hela Israel bhaliya jagare you will find some you know some Indians who were mostly settled you know from settled there from Indian region and Israel jetebele create heitla I'll just give you a brief introduction of Israel jetebele Israel mo tamu कहथि जे diaspora community and Israel because diaspora ro usually diaspora word ta ame term ta कहले we use it with reference to the Jews मानको context रे ame use करथुले and yes पुणी प्लीज म्यूट करंतु माइक्रोफोन yes so when we talk about you know settlement and absorption amaro Jews community जो माने इंडिया रे थिले से माने भी किछटा चेष्टा करथिले जे they would get absorbed there and if you look at the immigrant Jews Indian Jews and their descendants they were particularly settled in Israel Cochin ye ru jaithile and they are now very much settled because it is their new homeland because Israel Jews community ro सबबेले dream थिला जे Israel का तांकर homeland जदिवा से माने केबे visit कर नथिले कि केबे visit करिवार chance नथिला so you know thanks to this what you say the absorption of immigrants then Israel का गोटे home हैला to a particular ethnic community those were Jews but say Jews माने different parts of the world ru आसीथिले Jews मानकर religious ethnicity टा one किंतु linguistic ethnicity अलगा हे पारे सेथु इंडियन Jews हे पारिबे जर्मन रू Jews जाई थाई पारिबे से कोठी बु जाई थाई पारिबे सो सेटा गोटे डिफरेंट काइंड ऑफ ए गोटे माने गोटे Jewish गोटे consciousness जोटा कि you will not find anywhere in the world and there also you will find that Indian Jews जो माने थिले they could join there so I'll just give you that example so basically I will just try to sum it up trying to say that जेतले Middle East कथा हमें कहूचे you will just try to have few things in mind firstly you will see that migration true sense रे आरंभ होईची 70s रो normally अन्य cases रे late 19th century 1800 something रो सब countries रे आरंभ होई जायतिला एठी जदिबा ancient times रो किछटा migrants दिसुथिले but they were the elites real sense रे माने ordinary people the common masses जो माने कि bulk रे migrate होथले in search of work सेटा केबे ये टाइम्स रे आसिनी इवन colonial times रे भी हैला बहुत अल्प मात्रा रहला जतेबेले oil company खोलिला but basically it's a 20th century phenomena जो थरे कि mostly people from different backgrounds जाउथले to work in this
oil nations. And India ru majority 4-5 state ru hi jautile, and you will always see that these are the South Indians. And community formation eta gote nuwa pattern ro etiki hints tame mane rakhi thao when we talk about the Gulf nations. And eta differing facts यार अन्य कोनसी देश सहित किंबा continent सहित you will find that it's completely different in this way. Okay, now I will move on to the to your block 4, which is about policies. तम आमे सबु बडे policies जाको ही सबु बडे determine करूची whether migration हबो कि हबनी. एठी हठात लोक पळौछन्ती सेठी पळौनांती, हठात ए कंट्री टू डिमांड आसुची आउ कोठु आसुनी. द रीजन बीइंग दैट सेई जो कंट्री रो पॉलिसी टा कोन, केति की रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी रहूची, केति की लिबरल से स्टेट टा हेई पारुची, इट ऑल डिपेंड्स ऑन दैट. So you will see that second world war गोटे चेंज आनी थिला, जोथरे कि आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर तमे देखिबो जे इंडियंस दुनिया सारा चारियाडे देखिया मिलिले. ता पूर्वरु दैट वाज नॉट द केस. I'll just try to share this thing with you. Just a minute. Just a minute. Yeah. So when you talk about certain policies, you will see that it was the Second World War which actually changed the mindset of most of the nations. ସବୁ nations माने racially biased थिले. Second World War परे समस्तंकर मैन पावर दरकार पड़ला. हमें लास्ट क्लास पे डिस्कस करथिले जे वर्ल्ड वॉर परे एते क्षय क्षति हेई सारी थिला इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इन टर्म्स ऑफ मैन पावर कि तांको बाहर लोक मगिया को पड़थिला. Especially the European countries, North America, Australia, जो माने कि माने highly racist थिले. तांकर simply से माने चाहुथिले जे ताको कंटिनेंट रे खाली गोरा ही दिसंतु, only white. तेनु सेही अनुसार से माने डायरेक्टली से कहि परिबेनी कि जे मु कलर को देखि कि नेबी, से माने पॉलिसीज जाको को न को बाटरे मोडा तोडा करके ए टाइप रो माने आनुथिले, जोथि कि खाली व्हाइट लोक ही पसी परिबे. आम भलिया इंडियंस ब्राउन किंबा ब्लैक किंबा चाइनीज और एथनिसिटी किछि किछि कंट्री तो स्ट्रेटली कहि दउथिले कि जे आमे साउथ एशियंस को अलाउ करिबुनी आमे देशरे. तेनु सेकंड वर्ल्ड वॉर वाज द व्हाट यू से वाज द लैंडमार्क पीरियड फॉर दैट. There you will see that maximum numbers of Indians they came during this period to UK. ता पूर्वरु यूके भी अलाउ करनथला इंडियंस मान को, even though it was a colonial master, even though India has been its colony for almost 150 years, तथापि से अलाउ करिया पे बहुत restrictions रखितला. किंतु after second world war we started seeing that Indians were the maximum migrants to the UK. And it was a combined experience of war, partition, independence. जते हमें hate कले भी our lives were intermingled together. तो हमें पूरा हमें सेकंड वर्ल्ड वॉर ता एका सहित इंडियन सोल्जर्स माने ब्रिटिश फ्लैग अंडर रे युद्ध करछंती, पार्टीशन हैला, इंडिपेंडेंस हैला. तेनो सब बडे गोटे साइकोलॉजिकल कनेक्टिविटी रहिला फॉर यूके. एंड मैक्सिमम सेते हमें देखिलु कि जे लोक माइग्रेट करि गले यूके. And in spite of it, you will see that Britain was hardly a multicultural society. I think गोटे कि दीटा क्लास पूर्वरु आमे मल्टीकल्चरलिज्म विषय डिस्कस करथिले कि केमिति मल्टीकल्चरल सोसाइटी डेवलप करे. सो फॉर एग्जांपल गोटे ट्रिनिडाड भलिया सोसाइटी जोटी कि बहुत कल्चर लोक आसीबे, से माने तांकर इंडिजिनियस ये को मेंटेन करिवे, किछि असिमिलेशन हबो, गोटे नुवा प्रकार माने आमे ताके कहूची कि इंडिया इज अ मल्टीकल्चरल सोसाइटी. एथि आमे यूनिटी इन डाइवर्सिटी कथा कहूचु. केते प्रकार भाषा अछि, केते प्रकार जाति अछि, केते प्रकार धर्म अछि, बट वी स्टिल कोएक्सिस्ट. किंतु ब्रिटेन केस रे आमे सेटा कहि परिबानी बिकॉज़ किछि कोना को जगह रे तार से जो रेसिस्ट फीलिंग ता सब बळे रहितला. तेनो टिल सेकंड वर्ल्ड वॉर से केबे ता गेट खोली नथिला. 1946 रे सिमिलरली कनाडा गोटे सिटीजनशिप लॉ इंट्रोड्यूस कला. एंड इंडियंस पाकिस्तानी एमानन को अलाउ कला 47 रे बहुत अल्प मात्रा रे. हमें लास्ट क्लास आई थिंक जतले हमें नॉर्थ अमेरिका डिस्कस करथला, हमें देखले जे से कोटा सिस्टम इंट्रोड्यूस करथिला.
वर्ष को 100 जन 100टा इंडियंस जोठी पूरा हे गला 100 इंडियंस सेठी से माने रखि देबे दैट टू सेट माने बाछि किरी नेबे समस्त को नेबे नहीं. So Britain also came up with a British Nationality Act 1948 पड़कू. When all British Commonwealth nations were free to enter Britain, it restricted immigrants from Indian subcontinent and Africa and Caribbeans. तेणु जेतेबेले ब्रिटिश कॉमनवेल्थ नेशन केतेबेले हेला माने कोन माने ब्रिटिश अंडर जेति की देश थिले से माने फ्री हे गले से समस्त को अलाउ कला किंतु इंडियंस मानन को कलानी अफ्रीकन्स को कलानी और कैरिबियंस आइलैंड रे जो माने थिले से मान को कलानी 50s पर्यंत और बिगिनिंग 60s पर्यंत यार कारण कोन हे पारे इट्स जस्ट दैट your color was a problem to Britain. Then when you talk about Commonwealth Immigrants Act of 1962, it was adopted and put into practice in 65. It limited immigration to those who had jobs. जहारो चाकरी अछि से आसो, जहारो एई स्किल ता अछि ताले आसो. एमती rarely skill based ये काहु नोथला नहले it completely restricted them. Then idea of quota system जते बळे आसिला, it restricted semi skilled and unskilled Indian labor. मन इच्छा समस्त पळि आसी परिबेनी तेनु खाली सेमी स्किल्ड खाली जो माने स्किल्ड जो माने मोर इकोनॉमी को बूस्ट करि परिबे टेकी की धरि परिबे मु सेमती लोकन को नेबी दैट वाज इट वाज फॉर मोनेट्स डिसीजन ऑन दैट गोटे लूप होल थिला ए जो इमिग्रेशन पॉलिसी रे कोन ना फैमिली यूनिफिकेशन सपोज मु ऑलरेडी पळेइची मोर किछटा क्लॉज अछि मो फैमिली मेंबर्स किंतु सेमिति स्किल्ड के ही ना हंदी से माने जहा चाहउछन्ती से या नाही किंतु फैमिली कहि कि मु पूरा नहीं आसी परिबे से माने ए जो क्लॉज तार फायदा बहुत सिख कम्युनिटी नहीं थिला सो दैट्स द रीजन यू विल फाइंड द सिख कम्युनिटी इन लार्ज नंबर जोटा कि कनाडा रे भी से आ हिची फैमिली रीयूनिफिकेशन क्लॉज ता दे हैव टेकन द हेल्प ऑफ इन 1960s एंड अर्ली 70s आपण माने देखिबे कि जे इंडियंस फ्रॉम ईस्ट अफ्रीका वर एक्सेप्टेड as they were highly qualified 60s और 70s रे कोन हैला मु तुमको लास्ट क्लास रे अफ्रीका ईस्ट अफ्रीका रे पढिला वाला को कहथि कि जे अरब कॉन्शियसनेस ता राइज कला so you have this feeling this Kenyaization of your economy उगांडा रे भी सेमति से माने ताकर एथनिसिटी को बहुत स्ट्रेस देले तेनो इंडियंस मानन को छाड़ी के पळिया को कहले नले कहले कि तमे तमर ब्रिटिश पासपोर्ट हैंड ओवर करी कि तम माने सब कि अफ्रीकन से जाओ and it was not accepted but Indians से माने जोठी ऑलरेडी माइग्रेट करी कि इंडिया रो से माने एते वर्ष हला अफ्रीका रे सेटल हे जाइथिले they were already highly qualified and they were already skilled तेनो तांको टिके इजियर किछि जन को हेला ब्रिटेन जीवा तथापि ब्रिटिश समस्त को नै नथला आपण देखिबे जे सेई सब जगह रो बेसी कनाडा जाइथिले रादर देन ब्रिटेन तेनो विदिन 3 days कोन हेला ना ब्रिटेन पास्ड ए कॉमनवेल्थ एक्ट 1968 रे काहे माने पूरा सब पळि आसीबे कि 3 दिन भितर से ओटा एक्ट पास कला which restricted all British passport holders to reside unless they themselves are or our parents or grandparents have been brought up in UK माने either तमे UK रे तमे माने जन्म नै थिबो नहले तम पेरेंट्स की ग्रैंड पेरेंट्स के ना के गोटे UK रे थिबे रेसिडेंट है कि ताहले ही तांको मिली परिबो एमति ओटे क्लॉज कर देला फळ रे बहुत लोक restricted हे गले आ दैट वाज ए क्राइसिस टाइम फॉर दिस इंडियंस मानकर आ कोड जिबा को नथिला या neither they were able to return to India no सेठी अफ्रीका रे they were in a very uncomfortable situation you know it was considered to be a very what you say disgrace in to Britain British law टा को बहुत डिस्ग्रेसफुली लोक कहले कि जे ना एटा बहुत खराब कला ब्रिटेन ए टाइम रे हठात कोटे क्राइसिस टाइम रे से 3 दिन भीतर ए एक्ट टा को पास कला then you will see that the British government exposed themselves naivety by acting you know with this act and it started diverting most of the people to Canada जेतु ए जो एक्ट टा से पास कर देला ब्रिटिश पासपोर्ट थिले भी म जाई परिबेनी काना कियोटे थिबा दरकार ऑलरेडी रेसिडेंट पेरेंट ये हेथिबा दरकार ब्रिटिश हेथिबा दरकार कि ये हेथिबा दरकार तो दैट इज द रीजन आई वाज डाइवर्टेड टू कनाडा से समस्त को सेठू कनाडा पठे देथिला चाल करी सो व्हेन उगांडन क्राइसिस स्टार्टेड POIs started for Canada with very few coming to Britain कि कहना ता पूर्व से मानकर एक्सपीरियंस हे सटला कि उगांडा क्राइसिस हला को लोक कहले नाही हमें आगो कनाडा से माने अप्लाई करी कि जे पारले पळेगा
So prior to Second World War, you will see that anti-Asian sentiments North America रे बहुत भर्ती थिला. आमे देखिले 40s पर्यंत कोन से माने कोनोसी साउथ एशियन को अलाउ करिबेनी बोली they had taken a decision. For the first time 1947 रे Canada allow कला and that too it said that जो माने आर्म फोर्सेस रे सर्व करछंती and provided they are not of Asian origin से माने एशियन हेई नथिबे and आर्म फोर्सेस रे सर्व करथिबे मिलिटरी रे थिबे काइना से वर्ल्ड वॉर बळ को से माने ब्रिटेन पे लढी थिबे सेमिति हम इमिग्रेंट्स को हमें अलाउ करिबु तापर तेरे नेहरू विजिट कले कनाडा तापर कनाडिया रे इंडियंस मानु को राइट टू वोट मिलिला ता पूर्व दे वर नॉट गिवन द राइट टू वोट and in 1962 गोटे नुवा रेगुलेशन आसला जोटा कि prohibiting it was introduced which माने गोटे सब बळे कोन कनाडा रो जो पॉलिसी थिला जे माने रेशियली जिनसटा को नबो कलर वाइज नबो बिकॉज़ गोटे रेसिस्ट डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज थिला सो इट गेव अप ऑन दैट 60s रे जो लॉ ता आसला से ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट देखला कहला नाइ नाइ आउ सेमति देखि हबनी आमे देखिबा कि जे कहार स्किल केमिति के केमिति से अनुसार निया जीवो सिमिलरली ऑस्ट्रेलिया भी तार ऑल व्हाइट ऑस्ट्रेलिया पॉलिसी 60s बोल को छाडी देला एंड अमेरिका रे रूसवेल्ट प्रेसिडेंट रूसवेल्ट ना फॉर एफर्ट रे 1946 रे कोन हेतिला ना ई गोटे यूएस अमेंडमेंट बिल पास हेतिला जोटा कि 30 years of exclusionary immigration policies practices against Asians को बंद करला कहला नहीं this is not the case and after that से जो 100 quota system का आरंभ होइला which we have already talked about so finally 1965 रे से गेट खोलिला सब that to highly skilled Indian immigrants समस्त आसी जिवे गेट खोल देला माने नु जे समस्त पड़ी आसी परिबे those people who can help their economy grow who can actually boost their economy जो मानको नेले किछिटा फायदा हबो इकोनॉमिक कंडीशंस रे से सेई मानको ही खाली अलाउ करथिला and there you will see that 1996 sorry 1996 रे गोटे यूके रे कोन हैला ना गोटे परमानेंट रेसिडेंट जो माने को हमें कहू छु कि जे टीएनसीस माने थर्ड कंट्री नेशनल्स जो माने थिले से माने गोटे स्टेट रे हेले भी तांको कोन कि तांको गोटे किछटा परमिट करा जाय था बहुत अल्प दिन पे सेथि 1996 रे जो परमानेंट रेसिडेंट टीएनसीस को जो माने कि गोटे स्टेट रे थिले इधर से माने 10 वर्ष रहिथिबे नले अनलिमिटेड परमिट थिबो तांको धीरे धीरे कोन हैला ना गोटे यूरोपियन यूनियन रो जेति की भी कंट्रीज अछि सेठी की जीवासिया करिया को फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर प्रोवाइडिंग सर्टेन सर्विसेज से गेट्स गुडा को धीरे धीरे रीओपन करा गला and 99 रे कोन हैला ना you will see that there was this EC service provision card जोटा कि यूरोपियन यूनियन बेस्ड एंटरप्राइजेस जेति कि थिला जो माने कि सर्विस दोथिले ता भितरे जाई परिबे से माने नॉन EU एम्प्लॉइज जो माने गोटे मेंबर आउट मेंबर देश को जाई परिबो सेठी काम करि परिबो माने तांको भितरे जो बाउंड्री वॉल्स को स्लैकन कर दिया गला एंड देन जो माने सेल्फ एम्प्लॉयड थिले ए जो थर्ड कंट्री नेशनल्स माने जो माने भी निजर गोटे किछि बिजनेस आरंभ करथिले सेही माने भी सर्विस देई परिबे ए क्लॉज ता भी ऐड हैला okay then we will talk about certain issues certain types of issue based immigration policies ए जो immigration yes any doubt okay so we will talk about certain issues जोटा कि किछटा immigration policies को जोटा कि माने determine करथिला केतटा प्रकार पॉलिसीज थिला what were the different kind of policies
that actually that was faced by these countries. Gote thila ame tin charta type re taku divide kar dei pariba, and India mane sabu point re kichi na kichi experiment karchi, but it has never stuck to any one policy. Ya पर stage रे हम India कथा discuss करिबा, but India position ta बहुत गोटे neutral position भलिया थिला, माने we will come to the point later on. आपण माने देखिथिबे कि जे इंडिया रे नॉर्मली केबे गोटे रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज एज सच नथिला फॉर इमिग्रेशन, जेमति कि से माने रेसिस्ट पॉलिसीज किछटा रखिथिले कि हाईली ट्रेन्ड हेथिबे, एजुकेटेड हेथिबे, एक्सपीरियंस्ड हेथिबे, परवर्ती स्टेज रे एमिति कले इंडिया रे सेमति किछि नथिला. But from time to time certain restrictions were tried on for the problem of brain drain. ब्रेन ड्रेन कॉन्सेप्ट आसुतला बेसिकली मेडिकल सेक्टर रे. आपण माने देखंतु गोटे जेतले गोटे डॉक्टर को ट्रेन करिवा को 5 वर्ष जस्ट खाली का ग्रेजुएशन कंप्लीट करिया को तापरे पोस्ट ग्रेजुएशन आहुरी पुणी केते वर्ष स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग पे लागु छि, व्हिच इज अ हाईली सब्सिडाइज्ड फील्ड ऑफ नॉलेज. गवर्नमेंट बहुत माने स्पेंड करूची, एंड सेटा कोन होतला ना गोटे already there was the history of 3 decades कि medical studies पे लोक माने पढ़ी के डॉक्टर माने भी पढ़ौथिले, and at the same time किछिटा माने देखिया को मिलला इंस्टेंसेस जोथिरे कि हम देखले कि जे यूएस रो रेगुलेशन एते तार कड़ा अछि, माने रिगार्डिंग मेडिकल पर्सनल के प्रैक्टिस करि परिबो के करि परिबोनी. India started restricting its immigration policy कि किए जाई परिबो, and it's always aim to protect कारण आम मेडिकल कारण इंडिया जो टाइम रे इंडिपेंडेंस पाइतला टू स्पीक द ट्रुथ हमर जदी लिटरेसी रेट एते कम थिला जोटा कि 12% थिला. फॉरगेट अबाउट टेक्निकल एजुकेशन, प्रोफेशनल्स केते थिबे तेनु लोको को माने, and we were being visited by epidemics and all kind of diseases जेते बेले कि हमर लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमर मोर्टालिटी रेट एते अधिक थिला, एते लोक मरुथिले, मॉर्बिडिटी एते अधिक थिला, आ सेही टाइम रे डॉक्टर्स माने पळै जिबे. That was a serious concern. So even though तारा केबे सेमति किछि स्ट्रिक्टली रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी से रखि नथला, बट से चेष्टा करथला कि जे डॉक्टर्स माने एठी रुहंतु सो दैट एठी अनएजुकेटेड पुअर लोक जो माने अछने तांको ट्रीटमेंट पे, because that was the reason why government was spending so much on the medical training. So एथिरे गोटे रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी हमें देखिबा. Then there is this compensatory policy हमें को. It is well known as Bhagwati proposal 1976 रे. एथिरे कोन हैला ना ते proposed a tax the brain for brain drain. जदि तमे पढौछ से माने ओटे कहले कि जे हमें किछटा ओटे टैक्स नबो तमोठ for creating development fund that would benefit the developing countries losing their skilled labor. हम तमा हमरटा नै होलो तो से पळेला यूएस को कि से पळेला ये को, let them pay tax for that. Now say tax पैसा रे हमें ताको for the development पे ताको यूज करिवु. However, it could not be tasted due to problems of multilateral jurisdiction across countries. के केस करिवो ये करिवो कि प्रॉपर वे रे केबे ताको जदि बे से प्रपोजल ता आसीथिला केबे प्रॉपर्ली माने प्रैक्टिस हे परलानी. And in India there is no formal compensatory mechanism to compensate for the losses that the country incurs because of migration. माने हमें कहबा कि जे हां प्रत्येक वर्ष गवर्नमेंट आईआईटीएंस को ऊपर एते खर्च करूची, सपोज 50% आईआईटीएंस पढौछंती. We cannot do anything because as such हमें सेमिति केबे किछि रेस्ट्रिक्शन चेष्टा करिनु आनिया पे. And there is a policy in terms of incentives being offered to NRIs for sending funds to India through official channels. से तमे remittance दियो, तमे बैंक डिपॉजिट सेठी कराओ, तमे किछटा डेवलपमेंट बॉन्ड्स फ्लोट कराओ कि किछि कंपनीज रो किछटा सिक्योरिटीज किनो. And most incentives are in the form of higher rates of interest and lower rates of taxes. तुमको टैक्स कम दबा को पड़िबो आ higher rates of interest दबा को पड़िबो for NRIs as compared to normal Indian resident. So in fact the term non-resident was coined for the purpose of extending tax concession कि ताको कम टैक्स मिलो से माने टेम्पररी विजिटर्स भले आसे so that people will be attracted. माने लोक कहबे कि जे एकटा हम घर छाड़ी सारिछु आउ पुनी गवर्नमेंट के एते टैक्स दबो हम पूरा लुटी नेबे कोन दरकार, they will not have that feeling of identification. So compensatory policy कहले इंडिया रे ए दिटा गोटे प्रपोजल स्टेज रे ही सेटा पळैतिला, and second
this is the thing where we are trying to draw more and more actually incentive. Etle actually India रे समति किछि compensatory policy नाही कहले चलेबो कि ना restrictive policy only for किछि years पे से medical लिए को नहीं कि टिके बरेट थिला. Then restorative policies जदि हम देखिबा आमे देखिबा कि they are aimed at encouraging return migration कि अच्छा घर को फेरी आसो इधर परमानेंटली आसो कि टेम्पररीली किछि दिन पे आसो. So गोटे इंटरनेशनल स्कीम आसीथिला याकू टॉप 10 बोली कुआ जाउता. It was launched by UNDP in many countries. इंडिया कोन कथला ए स्कीम ता तापे इनइफेक्टिव हेतिला काना आमे याकू ठीक से ऑपरेशनलाइज कर पानथिलु. किछिटा प्राइवेट इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट्स थिला who were encouraged to offer placements to the returning visiting NRIs. तांको प्लेसमेंट जो माने आसुथिले आमे तांको एनकरेज करथुलु कि जे तमे प्लेसमेंट दियो हमर जो भी प्राइवेट फर्म्स रहेला कि गोटे गोटे ठीक से जेमती माने हमर एटलीस्ट नॉल ट्रांसफर ऑफ नॉलेज हे पारिबो टेक्नोलॉजी हे पारिबो यांक थ्रू रे किछि देई कि तमे जेमती जिवो इन टर्म्स ऑफ नॉलेज ला कि इन टर्म्स ऑफ एनी अदर काइंड ऑफ रिसोर्सेस ला. तेनो एठी कोन हैला ना ए जो पुल ऑफिसर स्कीम आमे जोटा कहउथुलु was launched by CSIR and it was meant for permanent returnees of India. Setale kon hela na the UGC had started a research scientist scheme to attract Indian scientists from abroad to offer with offers of placement in Indian universities ki Indian scientists माने जो माने बाहर यूनिवर्सिटीज रे रहउछनी प्रोफेसर हे कि साइंटिस्ट हे कि अर्ली 80s रे से माने एठी आसो हमें तंगो रिसर्च ग्रांट दबु तंको एडिशनल सैलरी दबु इंडियंस माने पठारु. तेनो ए जो स्कीम ता बहुत भलो चलिला बट ran into trouble because of dilution of standards. हमें माने आको हमें कोन कलु ना का स्टैंडर्ड्स ता रखिले नै बेले बेले कोन हला ना सब स्टैंडर्ड स्कॉलर्स जो माने कि अनएम्प्लॉयड from within India किछि दिन बाहर जाय कि किछि सेथरे कोनी मैल प्रैक्टिसेस आरंभ होला एंड बजट कंस्ट्रेंट भी होला तेनु 90s वर्ल्ड को यूजीसी कोन कला ना ए जो स्कीम टा को कोनी विथड्रॉ कर देला. सो दैट वाज वन ऑफ द स्कीम्स. आउट ऑफ द डेवलपमेंटल पॉलिसीज कोन हैला ना इट वाज स्पेसिफिकली एम्ड एट ब्रेन ड्रेन और लेबर एक्सोडस कि माने काहे कोन माने ए जो मास इमिग्रेशन होची तेनु कोन डेवलपमेंट गैप रही पारुची होम कंट्री रा डेवलप्ड नेशन जोठी भी जाउछन से माने अमेरिका कनाडा जाउछन से माने काहे पळुछंती. तेनु एठी कोन हैला ना जे दिस पॉलिसी हैव रिमेन्ड एज अटेंशन ड्राइंग प्रोमिसेस. पॉलिटिकल पार्टीज माने सब बड़ 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 कथा कहबे कि जे हां हम एटा करबा सेटा करबा लोक जेमती फेरी के आसीबे आ के निज घर न छाडी के जाऊ. बट ऑफ लेट देखा गला कि जे when Indian judiciary has begun taking the government to task for non-performance on promises. For example, the case of universal primary education until the age of 40. 14 वर्ष पे एजुकेशन टा फ्री. तेनो judiciary एबे क्वेश्चन करिवो गवर्नमेंट को कि काहे सेटा इंप्लीमेंटेड हे पालानी. एग्जांपल्स कि म्यूट कर दिया ठीक है. Yes. The proposals for setting up science parks काहे हे पारिनी कि सपोज मु कहबे कि जे गोटे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड रे तमे काहे के एमिति रखिनो तेनो एमिति किछिटा लूप होल्स हैला जोथरे कि जो डेवलपमेंट पॉलिसीज कथाटा उठिला किंतु we could actually never take it up properly in a proper way. That was one of the reasons. These are the various kind of issue based immigration policies. Then as such India रे जोटे immigration policy देखिबो से हटात कोटे चेष्टा करे माने अच्छा ए इशूटा राइज कला maybe we can think of such a policy, but again say policy ta fizzle out कर जाय. It has not stuck to any one particular kind of criteria and it's a fortunate thing कि हमर at least किछ गोटे racially discriminatory policy आज पर्यंत इंडिया केबे अडॉप्ट करनी कि याकू नबुनी ताकू नबुनी. That is one thing. Then policy negotiation जोटा कि हमें साउथ एशियन माइग्रेशन को अफेक्ट कला भितर जेमति कि हमर एते गुडे ऑर्गेनाइजेशन आसियान हैला सार्क कंट्रीज हैला कोऑपरेशन बिटवीन साउथ एशियन कंट्रीज जोटा करहैला तेनो ता भितर किछटा मल्टीलैटरल इनिशिएटिव्स बिसरे हमें डिस्कस करिया को चेष्टा करथुलु जेमति कि ता स्टेक होल्डर्स हे परिबे इन द फील्ड ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेशन जेमति माने से माने किछटा से जिंस को डिटरमिन करिवे
कि ए कंट्री भीतर इंटरनेशनल माइग्रेशन टा बढ़िबो कि कमिबो को प्रकार सेफ न हो सो कंट्रीज और द रीजन ऑफ इमिग्रेशन से जिनस गुडा को कोन हैला ना गोटे मल्टीलैटरल सिचुएशन ने केमती हैंडल हबो वेयर more nations would be involved in the process ଆଉ यार गोटे prominent forum थिला GATT ଆଉ WTO जोटा कि माइग्रेशन पॉलिसीज गुडा को टिके स्ट्रीमलाइन करूथिला GATT रो गोटे प्रोविजन थिला जोटा कि हमें मोड 1 बोली कहू तार चारिटा मोड विषय थिला गोटे माने मोड 1 एंड मोड 2 भी मोड 4 विषय बहुत चर्चा हेतिला it was about consumption abroad and what kind of consumption we were talking about education टा तमे देखो as students we would go out to study abroad तेनु सेटा भी गोटे माने गोटे माइग्रेशन गोटे मेजर फोरम थिला आ मोड 4 टा थिला कोन ना प्रेजेंस ऑफ नेचुरल पर्सन्स व्हिच रेफर्स टू फ्रीडम फॉर वर्कर्स इन द कंट्री ऑफ ओरिजिन टू मूव टू अदर कंट्रीज टू प्रोवाइड सर्विसेज फॉर टेम्पररी स्टे कि अल्प दिन पे कि स्टे स्टडी माने ताकर services they paribe mode 2 or mode 3 talked about cross border supply of online courses material and through internet through ame jemti ebe exchange korchu material through internet tame ghare bascho mu bhi ghare bascho and we are trying to have a class and commercial most important was the e bhitro jo mode 2 or 3 re in the presence of foreign universities e jo foreign universities कथाटा आसिला आपण माने देखिबे जे you know foreign universities presence टा गोटे मेजर हमरो एजुकेशन स्ट्रक्चर रे आ गोटे करिकुलम रे चेंज आनी छी there is a shift in education preference ebe dekho when I remember when I used to be in college our time re utmost importance was given to science natural sciences either tame medical पढ़ो engineering पढ़ो नले BSc करो तमे यदि आर्ट्स स्ट्रीम के आउ कोन दे देखुछो ह्यूमैनिटीज देखुछो it's a doom case for you but today you will see the younger generation they offer commerce foreign languages रो बेटे नुवा ट्रेंड आछि it is with the establishment of foreign universities जोटा कि चारियाडे खुलिलानी हेबे so these opening of these new foreign universities in developing countries you would see that there is a gain हमको तो हेछि गोटे गेनफुल सर्विस रहिछि किंतु हमर एबे डर भी पणी रहिलानी हमें जदी बाटा को ब्रेन गेन कहूछु ये कहूछु हमको डर भी गोटे रहउछि कि जे गोटे पुणी गोटे नुवा फॉर्म ऑफ ब्रेन ड्रेन सिचुएशन एबे आरंभ होई जिवो कारण ए जो एजुकेशन टा फॉरेन यूनिवर्सिटी जोटा ऑफर करूछि सेटे इंटरनेशनल मार्केट को कैटर करूछि हमर ए जो सिलेबस को नै कि ए को नै कि हमर चाली अछि हमर यूजीसी जेमति करूछि सेटा न करी कि सेटे देखुछि अच्छा एटा बाहर चलुछि तेन गोटे मार्केट कमोडिटी एबे हेलानी एंड यू नो सेटा कोन होछि ना फॉरेन यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश होछि गोटे डेवलपिंग कंट्री हम भलिया गोटे देश रे सपोज से एबे इंडिया भलिया गोटे देश रे आसीबो ताको एबे से कहबो कि जे मते पूरा दरकार बे 1000 एकड़ लैंड कि 2000 एकड़ लैंड दरकार you know in terms of kaha cost to developing country ro cost re seta hochi and at the same time got a brain drain situation bhi he jauchi jota ki hame कहबा कि जे ultimately india को केतना लाभ क्षति होची सेटा we have to actually take a record of take an account of but it is not important it is important to note that these foreign universities have been framed in mind keeping the future requirements कि फ्यूचर रे हमको आहुरी एमिति गोटे सिचुएशन फेस करिया को पड़िबो एंड दैट इज द रीजन व्हाई वी नीड दिस काइंड ऑफ फॉरेन यूनिवर्सिटी जति बात करिकुलम अलगा दे हैव अ इंटरनेशनल मार्केट में तो इंडिया रे आज से करिकुलम ता नाही बट आफ्टर फ्यू इयर्स maybe we will have to open our doors to this kind of a curriculum. Then we have to talk about regional and certain bilateral initiatives. You will see that jitna हम regional और bilateral trade विषय कहूचे among the South Asian countries, they have the control over exclusive control over international migration. So international migration ताको भी बहुत mind रखी की frame करछंती. In case of trade, there has been bilateral cooperation than
रीजनल हमर एतका रीजनल कोऑपरेशन डेवलप करि पानी जेमति कि आपण ईयू कथा देखंतु यूरोपियन यूनियन कथा देखंतु हमें मझिरे भाबिथिले हां किछटा साउथ एशियन कंट्रीज आई थिंक वी आर टॉकिंग अबाउट अ कॉमन करेंसी लाइक जेमति कि से माने यूरो विषय कहउथुले बट नॉर्मली देखा को मिलला कि जे आम केस रे वी वर एक्चुअली एट ईज विथ bilateral cooperation rather than the regional cooperation. And here you can see that India has concluded some partnership with EU, USA, China, Russia, Japan. For IIT professors, there is a dialogue to, you know, कि हमें paperwork पे किसी रखिबा नहीं से माने एक दिन जाए कि EU रे किसी ये कर पाइबे contribute कर पाइबे ଗୋଟେ temporary period पे हमें किसी का slack करवा so that हम Indians की you know से माने भी gain करिबे at the same time we don't lose out on our minds and Bangladesh government भी चेष्टा करछि कि foreign government संगे set up करिबा it has set up a Bangladesh overseas employment services because when you talk about employment we actually we are हमें एबे देखु छे कि फ्यूचर एबे कोन जदी हमें पॉलिसीज जाको एई अनुसार नउचे हमें यूज करि जाउचे ना फ्यूचर रे we will think of gaining something तेनो एजुकेशन सिस्टम ता केमति रखिबा हमें कोवाटरे चालिबा ए सब जिंसडा को वी हैव टू कीप इन माइंड किंतु जेते बडे ई जो बायलैटरल की यूनिलैटरल स्कीम्स उडा का हमें देखु छे जे अच्छा हमें सक्सेसफुल मोर इन टर्म्स ऑफ यू नो बायलैटरल इन वन टू वन initiatives and that is how you know we have started building up our diaspora setup कि सही अनुसार बिकॉज़ ए जो पॉलिसी जो यूनिलैटरल और बायलैटरल स्कीम्स ऊपर ही डिपेंड करूची फ्यूचर माइग्रेशन ट्रेंड ता केमती होबो तेनो कहा सहित हमें लिंक ता चेष्टा करूचे कहा सहित हमें ये करूचे सही अनुसार सही माने हमें पूरा फ्यूचर ता को सही अनुसार डिसाइड कर दोचे then we will take up certain policy changes विषय किछ डिस्कस करिबा in India and the world then you will see that amar kon hitla na there exists a 1983 law जोटा कि रेगुलेट करथुला immigration of unskilled labor from India the country had been you know the country has been no well defined immigration no किछि access हम definition रखिने कि रूल की ये रखिने कि ये जाई परिबो से जाई परिबो कि काहा को हमें आनी परिबा इमिग्रेशन इज के भीतर को आसुची के भीतर को आसी हम डेफिनेशन रखिने हमें डायस्पोरा को नहीं कि भी बहुत डिफाइन करिया को चेष्टा करले जे कि आसीबो प्लीज म्यूट द माइक्रोफोन थैंक यू ओके हमें डायस्पोरा को नहीं कि एते डेफिनेशन आनले किंतु जो माने हम कंट्री को आसुचंती इमिग्रेशन को नहीं कि स्किल्ड सेमी स्किल्ड हम सेमति किछि रखि नथिले and you know we had provisions regarding entry regulation prevention of foreigners in India and foreign citizenship it is found in our constitution the citizenship act 1955 देखिबा ओटे please mute your microphone please mute your microphone okay disturbance hochi I don't know okay so what I was trying to say कि about a foreigners act 1946 अछि गोटे passport act अछि 1967 criminal procedure code अछि एटा को हमें indirectly किछटा draw करिया को चेष्टा करछे and if you talk about overseas Indian citizenship जोटा कि dual citizenship एटा Indian government confer कला 2005 रे माने 2005 रे आनिला confer कला 2006 रे and it actually it was redefining the immigration policy माने गोटे एटा लैंडमार्क गोटे पॉलिसी हैला बिकॉज़ ड्यूअल सिटीजनशिप हमें केबे ता पूर्व अलाउ करि नथिले and it was not only important in terms of you know interconnection between India and the world but you know creating a new kind of a community with the what you say with the diaspora Indians so Indian diaspora जदी देखिबो for the Indian diaspora जो माने कि गल्फ रे अछंती जो माने कि बहुत बड़ा रेमिटेंस दोछंती homeland को but can never hope to become naturalized citizens of these countries because amar gote restrictive regime सबळे थिला जे नाही तमे
आसी परिबो किछि दिन पे हम रहि परिबो किंतु जदी रहिबो हमें मना करबनी इमिग्रेशन पॉलिसी रे हम किछि प्रॉब्लम नै किंतु तमे दीटा देशर पॉलिसी सॉरी पासपोर्ट तमे रखि परिबनी तमे सिटीजनशिप दीटा रो नै परिबनी दैट वाज द रेस्ट्रिक्टिव थिंग तेनो जणे जदी सेठी रोजगार करछि किंतु होमलैंड प्रति तार सेति की अफिनिटी रहिछि से काहे की पठेबो तमको that was the thing so the Indian government announced at the 4th Prabasi Bharatiya Divas 2006 re that their demand for voting rights to be exercised from abroad ebe dual citizenship mili paribo tame ebe abroad ru vote dei paribo तुमको पर्सनली आसी की वोट दबा दरकार नै कारण वोटिंग राइट का ही बड़ा बड़ा बहुत बड़ा क्राइटेरिया सिटीजनशिप and then when you talk about the policy of dual citizenship and you talk about granting of voting rights to the by Indians to Indian diaspora there is a report the report of the Global Commission on International Migration जोटा कि इटा सबमिट करा जायतला यूएन सेक्रेटरी जनरल को 2005 अक्टोबर रे रिपोर्ट रा टाइटल थिला माइग्रेशन इन एन इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड न्यू डायरेक्शंस फॉर एक्शन a report if you look at the report you will see that गोटे से गोटे रोड मैप देछि जे इंटरनेशनल माइग्रेशन रा गोटे रोड मैप आ से रिपोर्ट टाइटा कंक्लूड करछि जे गोटे इंटरनेशनल कम्युनिटी से कोन करछि एज एन इंटरनेशनल कम्युनिटी वी हैव एक्चुअली फेल्ड टू टेक अप द अपॉर्चुनिटीज एंड मीट द चैलेंजेस जोटा कि हमें करि पारि थाते तेनो ए कमीशन इफ आई कोट द कमीशंस लैंग्वेज you will see that the commission concludes that if the benefits of international migration are to be maximized and its adverse consequences minimized, then migration policies should be based on shared objective and a common vision. माने सब बळे ऑब्जेक्टिव हमें देखिबा खाली हम देशर कोन लाभ होउची सेटा देखिले होबनी we will try to see कि सेई मानकर कोन हबो हमर कोन हबो तेन गोटे शेयर्ड ऑब्जेक्टिव थिबा दरकार गोटे कनेक्टिविटी हमें बढ़ाय को चेष्टा करूचे हमें या कोने जे ना ना तमे खाली दे दियो तमन को हमें भूली साडो तमरा आ कुछ राइट सेठी ना तने why will one feel connected at the first place तेन आ गोटे एम्फसिस से रिपोर्ट करथिला जे जो ट्रेडिशनल डिस्टिंक्शन अछि हमर बिटवीन स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर एटा गोटे इट्स एक्चुअली डजंट हेल्प अस से जस्टिस भी दोनी जो इतने कॉम्प्लेक्सिटी अछि इंटरनेशनल माइग्रेशन ट्रेंड्स रे सेटा ठीक से एक्चुअली ये करा जाउनी तेनो आमे ताको एक डिफरेंट क्राइटेरिया डिफरेंट लेवल रे आमे कैटेगराइज चेष्टा करिबा मे बी एजुकेशन अटेनमेंट सहित जोटा कि एसेंशियल वर्कर्स कहि परिबा तेनो एठी हमें एठी देखिया को मिलला कि ए जो वल्नरेबिलिटी ऑफ माइग्रेंट्स इज नॉट लिमिटेड टू अनस्किल्ड पीपल एठी देखिया को मिलला कि the system ensures that all migrants are kept exposed to vulnerability of one kind or the other it provides continuity and flexibility to the labor market तेनो गोटे सेफ्टी वैल्व भलिया को टाइम रे कोटार गोटे डिमांड रहउची so therefore attention to policy protection cannot be limited to the correction of specific situation it must question the system that continues to produce situations of exploitation तेनो हमें गोटे सेमिति सिचुएशन ही हमें क्वेश्चन करबा जोटा कि गोटे एक्सप्लॉयटेटिव हे पारिबो तेनो पॉलिसी डिस्कोर्स इन माइग्रेशन स्टॉप्स एट लेजिस्लेशन ऑफ रिकमेंडेशन when it comes to prescription of laws and procedures तेनो how to stop exploitation of the migrants mostly जो माने कि irregular migrants जो माने कि illegal migrants ताकर vested interest रहउची किंतु से माइग्रेशन प्लेस रे ताकर किछटा एक्सप्लॉयटेशन होची एंड आउटे कथा थिला फेमिनाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ऑफ लेबर रीजनलाइजेशन ऑफ लेबर एमिति किछटा फीचर्स को नै कि से जो माने जोटा कि आईएलओ ऑलरेडी आइडेंटिफाई करि सछि ता कन्वेंशंस रे इमिग्रेशन लॉस ताकू नै कि भी माने किछटा स्टेप इन करंतु सो एठी जो हमें कहू छी कि गोटे सिस्टमिक वल्नरेबिलिटी जनरेट हे जाउची ओठी ना डेवलपिंग होम कंट्रीज रे जोठी कि माने वंस तमे जने जाउची लिटरली तेनु लिटरली एट द डोर स्टेप्स ऑफ द फॉरेन कंसुलेट कि हां वीजा मिलु मते एंट्री परमिट मिलु गोटे डिस्ट्रेसफुल सिचुएशन आ गोटे इट्स सच ए ह्यूमिलिएटिंग एक्सपीरियंस माने आई रिमेंबर गोटे तम टेक्स्ट बुक रे ही अछि गोटे एनेक्डोट अछि जोथरे कि जते बेले कनाडा जते दो नथिला इंडियंस मानन को एंट्री तांको लैंड को काइना से पूरा व्हाइट लैंड निजर चाहुथिला माने गोटे शिप को फेरे देइथिले
जो थे कि लोक मास धरिक ट्रावेल करथिबे आ सेथरु से माने बाछा पुछा करी कि नाही तमे आसी परिबो बाकी रेस्ट फेरी जाओ कोडे जाओ कोठी जाओ नो ये तेनो एटा गोटे बहुत ह्यूमिलिएटिंग सिचुएशन जे माने माइग्रेशन का जोटा कि गोटे एते बडो important phenomena today जोटा कि it maintains connectivity, it maintains economy, but we end up in a humiliating experience that the so-called off-white people कि ladies हेले elderly हेले gentlemen like हेले कि third world country हेले and more often than not subjected to their own lands by the white people brown sahibs हेले तेनो एटलीस्ट ए जो गोटे माइग्रेशन को नै कि जो एते बिटर एक्सपीरियंस दे कि आज पर्यंत माने गोटे वर्ल्ड फिनोमेना एटा एते जुग जुग हला आसी छी बट आम पॉलिसीज गुडा को एमिति हो जे आमे से जो एक्सप्लॉयटेटिव सिचुएशन ता को टिके कमे दबु आमे सेटा को एते बडा ह्यूमिलिएटिंग एक्सपीरियंस करि कि छाडिबुनी कहा पे भी so these were some of the concerns that we were trying to actually spell out and next I will take up the concerns of the Indian state Indian government आज पर्यंत माइग्रेशन को केमिति देखि छी you will see that आमे देखिबा नेहरू की prior to Nehru amara gote foreign country सहित how we have actually maintained any connection so the first example that comes to our mind is what happened during Mahatma Gandhi's time Mahatma Gandhi को period रे कोन हेइथिला प्री इंडिपेंडेंट इंडिया रे जते बळे महात्मा गांधी थिले he was in South Africa तेनु इंडिया तार फर्स्ट बदे वॉइस रेज करिछि सेई टाइम पे towards people of Indian origin जो माने कि ऑलरेडी सिटी सेटल थिले आउ आमे प्रीवियसली देखि सरचे कि आमे ओल्ड डायस्पोरा न्यू डायस्पोरा केते सिस्टम इंडेंजर्ड लेबर से कंगानी सिस्टम फ्री पैसेज मर्चेंट्स केते प्रकार डायस्पोरा क्रिएट हे चंती आ डायस्पोरा भितरे भी आमे क्लासिफिकेशन करिथिले पीआईओ पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन एनआरआई गोटे कोन पीआरआई ओवरसीज इंडियंस आमे केते प्रकार क्लासिफिकेशन करछि इट्स सच ए कॉम्प्लेक्स फिनोमेना बट हाउ इज द इंडियन स्टेट लुकिंग एट इट आमे कहले कि the first struggle that Mahatma Gandhi took up was in South Africa and it was for the PIOs of India sorry PIOs of South Africa जो माने people of Indian origin and the discriminatory treatment that African society used to bestow upon them and Mahatma Gandhi himself was a victim of it and that's the reason you know Mahatma Gandhi when he took up active politics and he went there in South Africa in late 19th century and later you know he started actually he experimented the kind of strategies and experiments he came up in India he had started everything in South Africa and in those times he was one of those global leaders जे कि माने गोटे आ गोटे देश रे किबा after he left India 1940s बळो को भी he raised his voice and Congress भी सेटा को सपोर्ट करथला Congress went to the extent of you know foiling its diplomatic relations से किछि कहला कि जे हमें किछि ट्रेडिंग रिलेशंस किछि भी डिप्लोमेटिक रिलेशंस हमें साउथ अफ्रीका संगे रखिबोनी because the connection with Gandhi normally Congress केबे समति इंटरवीन करिनी Indian state केबे इंटरवीन बेसी करि नथिला but it was only with South Africa's case and if you remember आमे किछिटा इंडियन सेटलर्स ईस्ट अफ्रीका रे तांको पीआईओस विषय डिस्कस करथिले लास्ट क्लास there is this East African Indian National Congress which was based on the model of the INC jota ki and this was founded in 1914 AM Jeevan ji he actually started voicing the grievances of the Indian settlers the Indian diaspora in East Africa because East Africa रे Indian मानकर conditions सेतले बहुत खराब थले Africanization कथा आसिला and he went on to the extent of saying कि हम Indians माने आसीबु and we will annex the African society territory हमें माने पूरा ताकू कब्जा रे नै जिबु under the Indian empire हमें पूरा ताकू Indianize कर दबु
and he started arguing for a Asiatic kingdom in ancient times. Ki ancient times re sabu jak Asiatic kingdom thila ye thila gote nuwa discourse seti arambha kale jota ki Africans manku ahuri bi insecure kar dotla teno ei time re kon hela mane tome gote foreign land re acho and you have such kind of a discourses which was very, you know, it was certain anxious moments, it gave certain anxious moments. And Indians in Africa, they formed the middle section in the tier system. White ସବୁଠୁ ଉପରେ ଥିଲେ, black ସବୁଠୁ ତଳେ ଥିଲେ, Indians browns ମାନେ ମଝା ମଝିଆ ଥିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଏତେ ବି ଗୋଟେ vulnerable state ରେ ନଥିଲେ କି ପୁରା highest position ରେ ନଥିଲେ। However, their presence was apparent to the Africans because white ପଳେଇଲା ପରେ ଏବେ next dominating role Indians ମାନଙ୍କର ଆସି ଯାଇଥାନ୍ତା, and mostly they are doing very well in business, retail, shops, ଏ ସବୁ ଇଏରେ ବହୁତ ଭଲ କରୁଥିଲେ। And at the same time, they were aggressive in commercial sector। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ ମରିସସ୍, ଫିଜି ଏ ସବୁ ଜାଗାରେ ବି they were quite dominant। And Mahatma Gandhi had sent Maninal doctor while coming back from South Africa to mobilize them for education। our class भी କହିଥିଲି because he believed कि Indians ମାନଙ୍କର education ଟା ହିଁ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ weapon ତାଙ୍କ ହାତରେ, when especially when we are situated outside ଲୋକ ତମକୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ତମକୁ respect ଦେବେ। and he advised them to actively participate कि तमे politics रे जेमति हेले participate करो, because जदि if you don't do that and that too you are in a foreign nation, then you will be crushed, you will be completely crushed, तमे गोटे marginalized situation को पळेइबो। and Indians also use nationalism to mobilize the Indian diaspora कि अच्छा हमें भी Indian तमे भी Indian, let's come together as a community। free India रे न हेले भी जोठी भी हेले। and Gandhi usually, he believed that that cultural space has to be given to them। जो भी community गोटे आ गोटे देश रे रहले भी ताको सेति की independence freedom दरकार से जो cultural space निजरा develop करिया पे। and then Nehru कर policies जदि देखिबो, Nehru first raised his voice against South Africa because diplomatic relations खराब कले, but he became bit worried। से देखिले कि जदि मो एठी अफ्रीका रे इंडियंस को पे if I stand for, I have to take the same stance for all the Indian diaspora globally, and that was not possible। so he he started broadening this area of discourse कि ना we are not talking about Indians but anyone who is weak and who doesn't have these rights, they should be actually given। so the black community को भी extend further है। the reason being कि Indians who were migrated to Burma, Malaysia, Sri Lanka, they were not in a good state of affairs। जेमति मु कहली कि जे बर्मा रे they were asked to leave, तांको जेति की नेशनल प्रॉपर्टी थिला, जेति की निजर प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी थिला, सब गवर्नमेंट नै गला, सब टेक ओवर कर देला। and he was but Nehru was also responsible in evolving India's policies towards this Indian settled abroad in Caribbeans as well। she appointed ହେଇଥିଲେ 1927 रे ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी रे, and सेठी से फॉरेन पॉलिसी जते बळे टेक अप इधर डिस्कस करथले, he had all these things in mind and he always believed कि तमे जते बळे गोटे देश रे अछ, you have to you have to cooperate with the people of that country and you have to win your own position as a friend कि तमे तांको सर्विस प्रोवाइड करो, because तमे सेठी जाइछ माने तमे सेठी कोऑपरेट करिवो, तमको गोटे स्पेशल पोजीशन, स्पेशल स्टेटस दिया दिबो, डोंट एक्सपेक्ट दैट। किंतु नेहरू को ए व्यूटा अन्य कांग्रेस लीडर्स एक्सेप्ट करू नथिले। यू टॉक अबाउट पीपल लाइक मालविया, गोखले किंबा श्रीनिवास शास्त्री, they believed that Indians mane discriminated ho chanti and they were the ones who had recruited them, seman tanku nei thile, it is their duty। and that is how the Congress took up its position कि हाँ humanitarian position देखिला से जेते बळे अफ्रीका रे पूरा कंडीशंस खराब होबा को लागुतला, जेते बर्मा रे they were suffering, it said कि okay तमे एते वर्ष रहिलोनी but try to identify yourself with the Africans there, तमे चेष्टा करो सब ठीक हे जिवो। he was trying to give those kind of ideas। and for as far as if you want to return to India, you will be accepted, but the thing is that you cannot have dual citizenship। तेनो जने केनियानाइजेशन भी हैला माने बहुत लोको
कहले कि जे यू नो the leaders of the white settlers जो माने कि केनिया रे और साउथ अफ्रीका रे थिले, and they had seen in Indian independence as a threat to British rule in Africa, and they started calling Hindu Nehru a Hindu communist because सी आसिले यूरोपियन को रिप्लेस करके बे इंडियंस मान को पावर रे बसै देबे, तेनु सेही फियर ता अफ्रीकन मानकर रहुथिला सब बळे. So that was the reason Nehru did not want to intervene into its policy affairs, and at the same time gote different view ye bhi deythila. What you say, माने ब्रिटिश गवर्नमेंट भी किछटा सेमिति माने से जो गैप टाकू ब्रिज करिबारे बेसी किछि हेल्प करनतला, रादर से जो ओपिनियन टाकू आहुरी फर्दर एस्केलेट करथिला. And if you look at the conditions of Indian migrants जोटा कि नेबरिंग कंट्री रे हमर बर्मा रे, मलेशिया रे, उगांडा रे थिले, से माने पूरा पूरी इग्नोर्ड हेइ छथि. Ceylon was so close, केते प्रोटेस्ट हेछि, केते नॉइज हेछि, but Nehru kept quiet. They kept quiet because he knew kids there are millions and millions of POIs around, and he cannot extend or citizenship to all, and India protested against Citizenship Act of Ceylon. It did, which was disqualifying the PIOs. But at the same time जेमती Chinese government कहबो कि जे मो ट्रूप पठे देबी, सेही एक्सटेंड पर्यंत से ये करिनी. And if you look at that, in fact, the problems of POIs in different countries were so diverse, so very different. And at that stage, when India was just a nascent nation which was so small, गोटे नुआ देश थिला, नुआ नुआ इंडिपेंडेंस पाई थिला, तापे तमे भाबो आमे एबे केतेटा कंटिनेंट डिस्कस करलेनी, और केतेटा कंटिनेंट रे केतेटा कंट्रीज डिस्कस करलेनी, और सबुथिरे माने millions and millions of PIOs अछंती, people of Indian origin. तेनु आ सब प्रॉब्लम गुडा को यूनिक थिला, and in fact समस्त को प्रॉब्लम जेतु एते डाइवर्स, एते यूनिक, ए जो छोटो गुटे नुआ देश इंडिया भलिया सेटा पूरा पूरी एड्रेस करि पार न थांता. किंतु नेहरू had other priorities like mobilizing. से कहले नाही आफ्रो एशियन कंट्रीज रे गोटे माने किछि तमे सेमति वॉर लाइक सिचुएशन रखनी, तमे एक्सेप्ट करिनियो तमर अफ्रीकन आइडेंटिटी को, तमे तम पासपोर्ट हैंड ओवर कर दियो, तमे गोटे इंडियन बोली गोटे सेमति फीलिंग रखनी, तमे ताक संगे पूरा मिसी गले किछि असुविधा नाही, तमे निजे ताको आपणे नेले से माने भी आपणे नेले. So this was the kind of words he was trying to use for bridging the gap between Indians and Africans. So Nehru's policy for extorting Indians to identify themselves with locals in Asia hella, Africa hella, it was not based on his ideological commitment कि हाँ कांग्रेस रा ideological commitment है या किसी है. It was completely his own personal choice. And in Kenya तमे देखिबो जे Indian settlers was larger than European community. तेनु Kenya Europeans wanted to keep Kenya as a white man's country, and a strong anti-India campaign was also pursued by the whites in Africa. से माने सबले कहले अच्छा हम माने पे पळेइबु त हम माने तो बेसी ये नै, किंतु these are the people who are replacing us. आम जगहटा भी से माने नै जिवे, किंतु कारण से माने भी चाहू नथले कि जे तांको हातरो संगे संगे पूरा कंट्रोल टा पळो. तेनु व्हाइट माने भी आहुरी कंफ्यूजिंग सिचुएशन सेठी अराउज कले, सेठी एमिति र्यूमर स्प्रेड कले कि जोठी कि अफ्रीकन्स माने आहुरी माने बेसी तेजी गले. They were really scared of Indians कि Indians माने किछि करिया को जाउछन्ती. तेनु ईस्ट अफ्रीका रो सिचुएशन ऑलरेडी सेमति थिला. जे कैरिबियंस कथा कहिबा, you know we're so far off that knowingly their problems, their marginalization by the black community, and they were also ignored. से माने एतटा केबे voice ये करिना दि किछि ते क्रिएट करना दि problem. And unlike the problems of Indians in Ceylon हला, बर्मा हला, अफ्रीका हला, सेठी सेमिति किछि problem एतटा हेइ नथिला. Therefore it was distance रे थिला, connectivity एते Indian सहित maintain हेइ पार नथिला, maximum neglect of Indian diaspora सेठी हेइथिला by Nehru बोली कुहंती. कि but somehow सेमाने amicably रही जाइथिले, किंतु आमे एतटा जेहेतु गोटे बहुत दूर जगह रे थिला, पूरा वेस्टर्न हेमिस्फीयर रे थिला, इंडियन गवर्नमेंट एतटा कनेक्टिविटी केबे मेंटेन करि पार नथला कैरिबियन आइलैंड सहित. या प्लीज म्यूट द माइक्रोफोन. So if you look at
Nehru's position, we सेटा नेहरू को पोजीशन कहबा कि कांग्रेस रो पोजीशन कहबा, इट वाज क्वाइट न्यूट्रल एंड लोक बहुत दोष दियंती कि जे एनआरआई पीआईओस को पे से टाइम रे किछि करा जाय नथला, इंडिया उटे न्यूट्रल स्टेट दे नथला। मु जेमति तुमको लास्ट क्लास देथली कि जे ଗୋଟେ एग्जांपल देथली जे चाइना केमति ता ट्रूप पठे देथला, दे वर एक्सपेक्टिंग सच काइंड ऑफ अ बिहेवियर फ्रॉम द इंडियन स्टेट कि इंडियन स्टेट किंतु खाली दी चारटा पद कहि देला, केतले गोटे डिप्लोमेटिक मैसेज पठे दबो तांको गवर्नमेंट को कि हम लोग या चाहउछंती एंड दैट्स इट। एंड आपण माने देखिबे जे गोटे माउ माउ रेबेलियन ब्रेकआउट करतला केनिया रे, एंड वेरी फ्यू इंडियन सेटलर्स दे साइडेड विथ द ब्रिटिशर्स, से माने ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करथिले एंड दे वर अक्यूज्ड ऑफ बीइंग रेबल्स। There were few Europeans in Kenya who do not insist that New Delhi, through its official or unofficial representatives in India, has encouraged and added to the Mau Mau rebellion. जेहेतु से माने किछटा इंडियंस सेठी तांको जोग दे देथिले यूरोपियंस मानको, तेन गोटे चर्चा हे गला कि जे न्यू दिल्ली भी या पछरे अछि। तेनो द इंडियन एम्बेसडर टू केनिया Abba Pant was charged in British Parliament for fomenting Mau Mau trouble. Unlike what it did in South Africa, India took a softer stance and recalled Pant under pressure. So under pressure आसी से बेसी किछि ये कर नथिले। आ एमिति भी हेतला कि 1950s रे कोन हला ना, इंडियंस मानको माने Indians were considered as greatest hurdles because सेठी PIOs अछंती बोली इंडो अफ्रीकन रिलेशंस केबे डेवलप करि पाउनी। हमें देखिले कि जे इंडो अफ्रीकन रिलेशन एंशिएंट टाइम्स रो थिला, किंतु मॉडर्न टाइम्स रे हमें सेही जो ट्रेडिंग रिलेशन जते मेंटेन ठीक से करि पाउनथु बिकॉज़ ऑफ दिस क्राइसिस, सेटा गोटे आइडेंटिफाई हेतला। बट आफ्टर द इंडो चाइनीज वॉर 1962 परे कोन हैला ना, व्हेन इंडियन आइसोलेशन वाज एक्सपोज्ड, इंदिरा गांधी कोन कले ना, सी sent an official tour to African countries 1964. She continued to emphasize that Indians settled in Africa must identify themselves completely with the African people and make their fullest contribution to the society in which they live. So, however, her tour program in Africa, besides her official engagements, she made it not a point to miss Indian settlers. She basically इंडियन सेटलर मान जेमि टच करि कि जेबे तांको लीडर्स को संगे मीट करिवे, मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी संगे किछि गोटे लोकेशन रे देखा हेबे अल्प किछि लोकन को संगे। सो तापे से कोन कले ना किछि सी कॉल्ड इंडियन सेटलर्स एज एम्बेसडर्स ऑफ इंडिया इन अफ्रीका, जो माने पीएवाईस थिले। सिमिलरली से फिजी भी टूर करथिले एंड शी सेड दैट आई फील लाइक ए मदर कंसर्न्ड अबाउट द वेलफेयर ऑफ ए मैरिड डॉटर who has set up her home affair। गोटे झियो जेमति बाहा है कि पळेछि सासु घरे से केमिति अछि, जेमति मा गोटे व्यस्त हबो, मु सेमति इंडिया रे फिजी रे जो इंडियंस माने अछनी तांको पे मो टिके मते भारी व्यस्त लागुछि। नो सी तांको पोजीशन ता सब बळे माने से जो नेहरूवियन पॉलिसी ता को ये रखि कि एम्बेसडर ऑफ इंडिया सेटा को इम्प्लांट करथिले। सो these shifts became noticeable in many areas when Indira Gandhi became the prime minister. By second half of 1960s, you will see that there was increasing realization that Indians in Africa, whatever passport they may hold, should not be put outside India's Africa policy. They also suited India's move of economic diplomacy in Africa and other developing countries, as Indian settlers in Africa had a requisite capital and will share it with the Indian economic initiatives in African countries. सेते सेमाना एते बेसी सेथरे मुंड पुरेई नथिले। सेमाने कहबे कि नो, you just try to identify with that and this is the case, this is the scenario. बस योटे एम्बेसडर है कि द कनेक्टिविटी ता मेंटेन होबो, that's the way, that's the reason why she went around. आ गोटे pro diaspora policies किछटा 70s और 80s रे आस्थिला, we will just discuss that before winding up. आपण माने देखिबे जे गवर्नमेंट ऑफ केनिया गोटे केनियाइजेशन ऑफ इट्स इकोनॉमी प्रोग्राम से स्टार्ट कला 1967 रे, and when all non citizens, mostly because Kenya रे बहुत इंडियंस थिले and Indians were better off, से माने इकोनॉमिकली बेटर थिले, बिजनेस रे बेटर थिले, so largely Indians were asked to take work and residence permit के नाही तमे एते वर्ष रा रहि कि भी तमे परमिट नियो बिकॉज़ तमे गोटे फॉरेनर, तो सीधा गवर्नमेंट सेटा डिक्लेयर कर देला। सो इंडिया एडवाइस कि तमे मु तुमको आगु जोटा कहली कि जे तमे तमरो
पासपोर्ट सरेंडर कर दियो किंतु एठी गोटे एथनिसिटी रो प्रॉब्लम रहिला तेनो मोस्ट ऑफ द पीपल दे वर नॉट यू नो they were not happy with the situation. Please mute your microphone. Please mute your microphone. Yeah. So you will see that you know ए जो आमे जो कथाटा भी डिस्कस कले कि जे सेठी लोकन को भितर के इनसिक्योरिटी थिला आ जदी आमे इंडियन गवर्नमेंट कथा कहउतले गवर्नमेंट ता सब बळे माने इट बिलीव दैट इट्स अ क्राइसिस टाइम एंड इंडिया डिड नॉट रिएक्ट से माने सेटा फील कले जे इंडिया जमा रिएक्ट कलानी एंड इंडियन पार्लियामेंट ए जिनसटा को पूरा डिस्कस कला इंदिरा गांधी मेड एन इंटरवेंशन ड्यूरिंग द डिबेट से आश्चर्य कले कि जे गवर्नमेंट इज मॉनिटरिंग द सिचुएशन किछ हबनी केनिया रे लोकन को ये हबनी से हबनी एंड इंदिरा गांधी गोटे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जे थिले इंडियन मिनिस्टर बी आर भगत से ताको नायरोबी पठेले गोटे पर्सनल मेसेज देकी कि तांकर जो अछंती प्रेसिडेंट केनियाटा तांको तांको जाई कि ए कथाटा कुहो ए चिठीटा दियो जे आई एम जस्ट कंसर्न ए कथा एतिकी तांको जणाई दियो भगत जेतेबेले returned to India accepted in it was accepted in parliament that there was a rampant rumor in Kenya कि इंडिया से काहे की पठेई छी से निश्चय इंडिया रो इंटरनल अफेयर्स सहित केनिया रो इंटरवीन करिया के से माने आसी छंदी and he was going to ask them to slow down the process एया करिवो एया गोटे ऑलरेडी गोटे rumor से जिबा पूर्व स्टार्ट ही देला किंतु भगत को संगे गोटे प्रायर अपॉइंटमेंट थिला केनियाटा को संगे किंतु केनियाटा कोन करे ना एतरे पहुंची सारला पर लास्ट मोमेंट रे निजर अपॉइंटमेंट कैंसिल कर देले एंड से ताको वाइस प्रेसिडेंट को संगे ही खाली देखा करी कि पळि आसी पाले विदाउट डिलीवरिंग द लेटर टू केनियाटा बिकॉज़ ही डिड नॉट गिव एनी स्कोप फॉर दैट and Indian parliament felt that cancellation of Bhagat's appointment was it was such a bad thing such a mane gote undiplomatic relation gote hint करथिला and India एटा सस्पेक्ट कला कि जेथर ब्रिटिश हैंड अछि बिकॉज़ सेई टाइम रे ब्रिटेन चाहू नथला पूरा पूरी विथड्रॉ करिया को एंड इंडिया काहे डोमिनेंट हे जिवो बेसी ये पोजीशन हे जिवो तेनो एथरे गोटे र्यूमर स्प्रेड करि बारे एथरे ब्रिटिश हैंड थिला बोली इंडिया सेंस कला तेनो public opinion was raised in India as well as in Nairobi. The Times of India wrote, if the implication is that President Kenyatta fell into a trap led by him by a third party, it does little credit to his political acumen. ताने जदि गोटे प्रेसिडेंट एमिति न देखि गोटे लोक जाईति देखा करिया को तमे न देखि फेरे दोउचो इट्स सच ए बैड थिंग एंड ए कथाटा एया हेतला जे हठात लोक गोटे डरी गले जे अच्छा इंडिया आसुची एबे ये करची माने हमर कंट्रीटा एस्टैब्लिश्ड हैला पूर्वरु बिकॉज़ ऑफ दिस इंडियंस इंडियन गवर्नमेंट इंटरवीन करबा आरंभ करि सरलानी तो इट गेव अ बैड मैसेज टू द अफ्रीकन सोसाइटी एंड दैट इज द रीजन इंडियन स्टेट को लागिला जे नाही परहैप्स इफ आई स्टेप बैक से माने तांको कथा बुझंतु से माने निजको तांको सहित मिसे दियंतु दैट वुड बी अ better decision and it proposed to establish माने जेतले कोन हला ना when we started having Indian government started having bilateral talks with Kenya later on it proposed a Africa India Development Corporation with Kenya PIOs and Indian capital it aims to today it aims to seek integration of Indian community in the economic life of Kenya and that was the foundation it was trying to put a foundation for a multiracial society এটা ম্যাটেরিয়ালাইজ কিন্তু হেলানি বিকজ এই আফ্রিকান সোসাইটি संगे पर्यंत समहाउ ट्रेडिंग रिलेशंस कि किछि भी ম্যাটেরিয়ালাইজ हे पलानी कि से जो पीओ संगे किछि सेमिति गोटे बड़ गोटे माने कोन कहबी गोटे कम्युनिटेरियन लाइफ एस्टैब्लिश्ड हे पानी इंडिया आउट एग्जांपल मो आर्थर को तुमको अफ्रीका विषय भी देइथिली सेम थिंग युगांडा रे भी सेमती हैला एंड you will see that Uganda रे जते बळे Idi Amin he came to power 1971 से आसिले around 80,000 Asians थिले सेते बळे आ से भाबुथिले कि जे these Asians are actually polluting the corrupting the economy हमर देशटा पछुआ हे जाउ छै मानक पे तेनु तांको पे एमति लोकंक पे कि फॉर एग्जांपल इंडियंस को पे उगांडा रे किछि जगह नै देयर इज नो रूम फॉर देम एंड जेमति all PIs who were Kenyan citizen ब्रिटिश की अमेरिकन की इंडियन पासपोर्ट होल्डर जो मान को 90 डे नोटिस देथिले जे
ए डेट सुधा तुमने छाड़ी के पड़े. Please mute your microphone. So, Idi Amin, please mute your microphone. We have very less time left. Yeah. So, Idi Amin, please mute your microphone. So, he was who is it? Please mute your microphone. Well, so see what I noticed in the 90 days, no? Ki why say November 8, 72 bhitere tame sabu Indians you have to leave the country, and Amin called the expulsion of PIO as a part of the liberation war. Se mane tanku lagutila ki je India where Indians were the ones who were creating corruption in the society. Sorry, please mute your microphones. I'm not done yet. Give me 2 minutes or 5 minutes. So he said that it is a war of liberation, and Indian Deputy Minister of External Affairs had even said in the Parliament that we are in touch with Ugandan authorities, and I assure to protect these Indians. You know, the Indian President, while in Lusaka, denounced the expulsion and stated the happenings in Uganda have flown heavy clouds of doubt and uncertainty over the minds of many people of Indian origin. Kintu एथे कोन हैला ना just कोटे एमपी स्टेटमेंट दे कि जेतले रहि गले कोटे कोटे देयर वाज दिस पब्लिक ओपिनियन कोटे इंडिया रे इमर्ज कला जोथरे कि Amin's they started refuting strongly and ridicule Amin's allegation ki माने गोटे डर भी सब थर जेते भी अफ्रिका रे इंडिया जस्ट गोटे स्टेटमेंट भी दोची हां मोटा देखिबी कि हां से माने प्राइम मिनिस्टर जस्ट कहले कि हां सिचुएशन बहुत खराब अछि पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन को पे आ गोटे पेरिनियस डॉक्ट्रिन ऑफ रेशियलिज्म चलीची परमिट कर सलाणी फ्री अफ्रीका रे इट वाज जस्ट दैट स्टेटमेंट बट इट वाज इंटरप्रेटेड as a attack that Idi Amin felt that अच्छा इंडिया बोधे अटैक करतो सब बड़े अफ्रीका केस रे सेया हैला and India is planning to invade Africa along with Tanzania, Zambia सब जाको इंडिया बोधे अटैक करिबा ऊपरे अछि and India was taking tougher lines because ये racialism कथा कहलानी ये कहलानी जो कथाटा आबे देखला कि इंडियन सपोर्ट फॉर आफ्रो एशियन सॉलिडारिटी वाज अ कंस्ट्रेंट ना अफ्रीकन रिलेशनशिप मेंटेन हे करछि ना से किछि प्रोटेक्शन दे करछि त लोक आ सेठी आफ्रो इंडियंस माने भी जो माने अछंती से माने देखले कि जे अच्छा प्रतिथर से किछि स्टेटमेंट दोछि एंड दे आर नॉट कमिंग अप विथ कॉन्क्रीट से माने संगे संगे कह दे कि अच्छा ए देश इतने एटा करथांडा इंडिया हम पे किछि करलानी तो that was the thing. So the main consideration of India is not taking a tougher line. There is a tough line नहीं for its diaspora community, and it believed कि एक strong word issue कर देले किछि सेमती लाभ होबनी क्षति बरम होबो and जदी इंडिया गोटे कहि दबो कि जे नाही तमे यदि एमती करबो यू विल पे फॉर इट ये सीएमटी रे कहि दबो गोटे एंटी इंडियन किबा एंटी एशियन वेव सेठी आरंभ होई जिवो आहुरी टॉर्चर्ड हेबे लोक माने so that was the reason India never actually took up any tougher line, and at the same time possibly scope in Atla. And years later India faced the same constraint jetale gote Fiji re भी गोटे anti PIO started हे आरंभ होई गला Fiji रे हला बर्मा रे हला चारियाडे से सिचुएशन रहिला Fiji कथा भी हमें देखिले दि तीन थरा मिलिटरी कूप हे गला बट India did not have the capacity to change the situation. Media रे बहुत किछि आसतला Indians के करा जाउची शेयर करा जाउची at best कोन हला ना they actually the situation was such that it decided to mobilize regional powers कि ऑस्ट्रेलिया को कहला to side with India कि किछि एफर्ट दियो Fiji situation संभालिया पे मु तो जाई के ऑस्ट्रेलिया रे इंटरव्यू Fiji रे इंटरव्यू कर परिबेनी जे तो ऑस्ट्रेलिया टा पाख देश किछि इन्फ्लुएंस पके परिबो कि सिंस it has a dominant nationality of Indian in itself नाम समिट रहला कॉमनवेल्थ ग्रुप रहला एमिति जोटा माने जो जति कि सब bilateral multilateral national forums थिला से सेठी हाइलाइट करिया के चेष्टा करथिला जे पीआईओस मानकर अवस्था केमिति असुविधा रे अछि
ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା କଥା ଆମେ କହିବା ଯେ you will see that there were certain foreign policies ଯୋଉଟା କି ସତରେ ତାଙ୍କୁ ଇଏରେ ପକଉଥିଲା। ମୁଁ ଯେମିତି ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ ତମକୁ କହିଥିଲି କି ଯେ କିଛିଟା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଟେନ୍ୟୁଅର ଆକ୍ଟ ଥିଲା ଯୋଉଥିରେ କି ମାନେ ତମେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ମାନେ ଖାଲି ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଇଏରେ ରହିପାରିବେ, ସେମାନେ ଚାରିଆଡେ ଯୋଉଠି ପାଇବେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କିଣି ପାରିବେନି। ଆଣ୍ଡ ନେहरू ୱାଜ ଟ୍ରାଇଂ ଟୁ ବ୍ରିଜ ଦ ଗ୍ୟାପ୍। କିନ୍ତୁ ମୋର ଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆର ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ what you say ମାନେ the diaspora community was not that happy with the uh, interventions that the Indian government was taking during those period. ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଗଲ୍ଫ କଥା କହିବା ଆମେ ଦେଖିବା କି ଯେ ଯୋଉ ଅଏଲ ବୁମ୍ ହେଲା 70s ରେ ବହୁତ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ମାନେ ଯାଉଥିଲେ ଆଉ ସେଠି ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ କରିକି ସେଠି ଆସିକି ପୁଣି ମାନେ there was no chance to take up a citizenship, ସେମାନେ ପୁଣି ଫେରି ଆସୁଥିଲେ। ସେଥିରେ it benefited Indian ର foreign exchange reserve ଯୋଉଟା କି ବଢୁଥିଲା and government say time re it was encouraging that, and that is the reason it took up the issue of welfare of the migrant laborers in West Asia seriously कि हाँ ताको recruitments रे किछ असुविधा होनी कि से ताको exploit के कर दो ना कि deport हैला करे ताको केमती को conditions से ताको रहिया को पडुची labor hours केती कि से सेथरे किछटा intervene करिया को चेष्टा करथला। then proactively कहिया को गले इंडियन गवर्नमेंट 90s ପରେ diaspora community सहित connected ହେଇची। I told you the reason कि 90s ପରେ because post 90s we believe that it was a post globalization phase ebe ଆମେ जो हमर जो shift in conceptualization होला कि ना एटा brain drain होनी एटा brain bank होची एटा gain होची हमर foreign reserve आसीबो then ता पूर्वरु हमें कोन because या पूर्वरु खाली एते क्राइसिस थिला अफ्रीका रे क्राइसिस ऑस्ट्रेलिया रे क्राइसिस जोठी इंडियंस ऑफ पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन थिले गवर्नमेंट को क्राइसिस सिचुएशन फेस करिया पड़थिला। तेनो आमे सब बळे गोटे जस्ट माने इंडियन डायस्पोरा कहले इंडियन गवर्नमेंट को गोटे हेडेक भया लागिची गोटे लायबिलिटी भया लागिची बट फॉर द फर्स्ट टाइम 90s पर वी स्टार्टेड री लुकिंग एट द थिंग्स कि ना एनआरआई माने रेमिटेंस आसुची गल्फ रीजन रु केति की हम फॉरेन रिजर्व्स केति की बढ़ी ची एंड लिबरलाइजेशन पर वी स्टार्टेड रोपिंग इन ऑन द एनआरआईज माने दे आर सच ए ग्रेट स्ट्रेंथ टू अस। मुझे तुमको लास्ट क्लास कहितली जे तमे एबे हिंदी सिनेमा रिलीज हले आगो ग्लोबली एबे रिलीज होची दी तीन दिन पैसा टा उठी जाउची ना सेही सिचुएशन टा आगु नथिला। टुडे वी डू नॉट इट डजंट वेट कि इंडिया रे केते प्रॉफिट हैला ग्लोबली गोटे दे दिन रे डॉलर्स रे से माने पैसा कमे दोछंती सो इट इज बिकॉज़ ऑफ द कनेक्शन दैट यू हैव विद द डायस्पोरा ए जिंसटा रियलाइज करिया को हमको बहुत दिन लाग गला एंड दैट इज द रीजन प्रवासी भारतीय दिवस वी स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग ऑन 9th of January every day and the Bharat Samman it was always given to some distinguished PIO ki NRI on the part of the whoever was selected by the recommendation committee. Then 2006 re India gave overseas Indian citizenship like under dual citizenship scheme re as like say it rahi ki apna vote kar paribe you can feel that you are an Indian tenu in fact ebe 90s pore jetele diaspora katha ame hoche it's actually a power, it's an asset to us. We don't look at it as a liability jaha ko pe ame judho ladiya padibo ki am foreign relations kharap he jibo they are an asset ame barambar ebe seta ko reinstate koruchu so that is it. If you have any doubts you can ask right now. So, dear learners, any question to ma'am? Any doubts? You should speak something. How do how is the class? What you understood? Is it good or bad? Give some suggestion. The class was very good. Yeah, whoever is there, speak something. So, ma'am will rejuvenate. They have put on a message, no questions, sir. Okay, chalo, thank you very much. It's basically history type, so it's very interesting to listen to the story types of telling. So Yeah, I found it very interesting, sir. I mean,
You are very fortunate. You got a teacher like, I mean, Dr. Mohanty. She's an excellent teacher. Okay. So, I mean, anyway, I mean, it's nice. I mean, thank you very much, ma'am, from today's Thank you, sir. session. Thank you, learners. So, I mean, try to tell your friends to join more number of students tomorrow's class. So, with these words, stay safe, stay home. Okay, I conclude this session. See you again tomorrow. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you, participants.